I would like to congratulate you all that we have got a nod from the government. Our very well worked, or rather, we had worked for a year on a project, and that got approved. So the government has virtually accepted, or rather, they have agreed to fund the project, and that is a wonderful thing. So I am Dr. Kazi Adda, senior scientist working as senior scientist in agriculture department. So our head, Dr. Nazdi, I would like him, before we give the podium to our revered guest and a stalwart in floriculture, I will say horticulture. Before we hand over the podium to him, I would like Dr. Nazdi to come over to the dais, who is our HOD, because unfortunately, fortunately we were in the meeting and we didn't come in the formal session, in the inaugural session. So I would like him to give some, share some words and share some these views, because it's a very important training program going on for the first time in our this Dr. Nazdi, sir. Thank you, Kazi sir. Honorable Dardani sir, Dr. Khalil Khan sir, Dr. Zohar Raj sir, former HOD Dr. Zohar sir, one of our former HODs, Dr. T.M. Paul, was the first student of Solon University, first masters, roll number 1. He was also our HOD. आपने सोलन से ही पढ़ा था, तो डॉक्टर टी एम पॉल, he was the first student, डॉक्टर सैगल के, तो he was the first MSc and the first student of Solon University. So his name is synonymous with Solon University. तो he could not make it today because of some ill health. नहीं तो वो भी आ जाते, he would have been very pleased to be here. तो जो आज हम पहले जो है उसमें सेशन में नहीं आ सके, जो काजी साहब ने बोला आपको, we had a very important meeting with Chief Secretary. So we presented before the Chief Secretary a project worth 123 crores on pillows. So in principle he agreed, sir, but he said make it bigger and encompass all the aspects of floriculture, including not only bulbs, seed production, commercial floriculture, cutwork production, then landscaping. So we are given a deadline of 15 days to make this happen. So it's a huge task before us. So I may inform the academy also. So Vice Chancellor, Honorable Vice Chancellor has just now requested our esteemed experts today, Dr. Balaram and Dr. Dardani sir, to guide us. So they will be the Apex committee along with our own previous HOD, Dr. Zohar sir, and other members who will be guiding us. Before I start, I can see a lot of young people here. अभी जो वाला साहब आपको सुबह बोल रहे थे, 25 किलो उन्होंने पहले चिली सीड बनाया, जो एक्सपोर्ट किया, फिर 2-3 साल फेल हो गए, and then he took off. So right now he is exporting some 200 tons. 200 टन कोई मेरे ख्याल में 200 करोड़ के आसपास है एनुअल टर्नओवर। तो 12 करोड़ का ये सीडी इंपोर्ट करते हैं, तो देन दे मल्टीप्लाई इट हियर और फिर एक्सपोर्ट को भेज देते हैं। तो दे आर शॉपिंग, देखा होगा, आई डोंट वांट टू रिपीट इट। तो बिफोर आई स्टार्ट, I would like to introduce our expert today, Dr. Dardani sir. He is an eminent scientist with more than 4 decades of professional experience. इनके गुरु जी डॉक्टर विष्णु स्वरूप, he is the father figure in floriculture. तो उन्हीं के स्टूडेंट रहे हैं
he was a very eminent floriculturist. So he had a very eminent student in Dr. Dasnani, who is there in floriculture for the last 40 years. Sir. He has worked at the Indian Agricultural Research Institute from 1977 to 1999. So see the courage of the man. अब तो गवर्नमेंट जॉब के पीछे लगे रहते थे, कोई जो अगर यूनिवर्सिटी में एक बार घुस गया तो स्टॉप थिंकिंग ऑफ एनीथिंग एल्स। बोला आप सेटल हो गए, आप ठीक है, बैठो यहीं पर। सो आफ्टर ओनली सर 21 years you resigned from there and then you started your own consultancy and you guided these developmental programs in several countries, including Myanmar, Thailand, India, and then South Asia, and several lot of other countries. Run projects for those countries and devised their policies, directed their policies as FOA consultant, and then in agricultural development by Asian Development Bank and UNDP. So he has worked for a lot of agencies and तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनके पास फ्लोरिकल्चर का, जो अभी आप सुनने जा रहे हैं। तो उसके बाद ये इंडस्ट्री, सीड इंडस्ट्री में चले गए सर, 10 साल से उसी में है अभी। तो इस जो है, ज़्यादा एज नहीं बोलूँगा सर, इन स्पाइट ऑफ दिस, तो परसों मुझे बेंगलोर में मिले तो मैंने बोला सर आप आएंगे, तो उन्होंने बोला मैं आ जाऊँगा। सो उसी टाइम ये हो गया। तो सर ने, वी आर हाईली थैंकफुल टू यू सर फॉर accepting our request। तो आप आगे सर इन स्पाइट ऑफ योर बिजी शेड्यूल, तो आप प्लानिंग कमीशन से भी जुड़े रहे हैं, जो नीति आयोग था पहले, तो एंड देन एपिडा से आप डायरेक्टर रहे हैं हॉर्टिकल्चर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट्स अ वेरी बिग पोस्ट जो हॉर्टिकल्चर को कंट्री लेवल पर देखता है। सो जितनी भी पॉलिसी डेवलपमेंट है, फिर ये सारा, उसके बाद NHB से रहे आप, तो लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। तो आई डोंट वांट टू रिमेन इन बिटवीन सर एंड द ऑडियंस, जो हमारे पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। तो मे आई इनवाइट our esteemed friend K. Darmani to please speak to our participants here this afternoon. Thank you. आप लोगों से मेरी पहली रिक्वेस्ट तो ये रहेगी कि जो नाज़की साहब ने मेरे बारे में बोला था उसको भूल जाइए। देखिए, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, जैसे मैंने पहले भी बोला था, there is no difference between two individuals. It is only that I have spent 40 years with floriculture, so I have gained some wisdom. आप लोग भी जब 40 साल बाद मिलेंगे मुझसे, तो आप लोग भी यहाँ पे खड़े होकर बोल रहे होंगे, और मैं तो जिंदा नहीं रहूँगा, लेकिन दो लोग जिंदा रहे, दो लोग यहाँ पर आके सो गए, आपकी बतानी हमारी। देखिए, in the morning, what we got to hear from Dr. Alaran was how to take forward one component of floriculture. Floriculture is very vast. Even though when we talk about horticulture, as I said earlier, floriculture comes in the end, more or less in the end. And वो इसलिए भी है कि floriculture की जानकारी लोगों के पास बहुत कम है। I would like to share with just when I went to the Ministry of Agriculture as Director of the Government of India, my main program, my main brief was to develop floriculture in the country. क्योंकि उस साल में 10 करोड़ मिला था फ्लोरिकल्चर डेवलपमेंट के लिए पहली बार। उसके पहले वाले प्लान में हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए 25 करोड़ मिला था। उसके नेक्स्ट प्लान में 10 करोड़ मिला, उन्होंने कहा 10 करोड़ खर्च कीजिए। तो मैंने भी पूरा स्टडी किया। तो मैंने उनको, हमारे सेक्रेटरी साहब ने एक बार मीटिंग ले रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा पैसा खर्च नहीं हुआ। मैंने कहा होगा भी नहीं। तो कहते क्यों? मैंने कहा कि दिस हैज बीन ड्राफ्टेड वेरी रॉन्गली by people who have not understood floriculture, उसकी वैल्यू क्या है। और मैंने कहा एक चीज तो यह है कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए 1000 करोड़ मिला, आपने हमको 10 करोड़ दे दिया, 1%, which is not acceptable। तो उन्होंने कहा कि आप इसको रिवाइज कीजिए और उसको बढ़ाइए, थोड़ा सा कीजिए।
which my boss had told me that it's not possible. हमारे तो system है ना कि वो जो next 5-year plan बनेगा तो उसमें बढ़ेगा. तो खैर उसको मैं जितना भी बढ़ा सकता था बढ़ा के किया मैंने. And I traveled a lot, and wherever I went, that was my first brush with the development sector. कि भाई हम लोग research से थे, IRI से था मैं, तो research में शांति से थे कि भाई चलो ठीक है. But then I realized that what we are doing is not enough for the people for whom we are doing the work. And that is the reason when I travel all over the country and I realize that people are not aware of, they are ignorant about what is the floriculture. My brief today, when Naski Saab met me in Bangalore, where I was chairing one of the sessions in an international conference, उन्होंने कहा कि हम लोग कश्मीर में करेंगे, आप आएंगे? मैंने कहा आप आएंगे, जरूर आऊंगा मैं. Because floriculture has been my passion. And I would like to tell all the young people here, unless you can develop a passion for floriculture, don't get into floriculture. Don't do floriculture just as a side thing or something like that. Get into it with your full heart and develop a passion for it. You would, because once you start working with floriculture, you would develop interest, and interest will generate into passion. My brief today, as I was told, was to give an overview of floriculture. I was very happy when Alaram began the session in the morning, and he talked about one of the small components of floriculture, and we were all very excited. We just met the Vice Chancellor, and he was very happy because somebody said, I think said that today have been very lucky for us कि हम लोग यहाँ floriculture का program कर रहे हैं और वहाँ पे government of JNK, they are sanctioning crores of rupees for the floriculture development. Now that is slowly people are realizing the importance, and I'm sure once they know what is the total scenario in floriculture, there will be more laurels coming, more work for you people coming in. And I have prepared my presentation in a small way just to introduce. ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि आप ये लोग ये चीजें नहीं जानते होंगे. Maybe you know everything, and then at the end of the day you say कि भाई इसमें नया क्या है. But at the same time I would like to show it to you to kind of remind you that this is also very important. Each and everything we may know about it, but what is important in that also we need to understand and learn. So, all the youngsters people here, I'm not asking the floriculture department people. The other people, do you recognize that earlier photograph? What flower it was? It's a tuberose, जिसको हम रजनीगंधा बोलते हैं. No, this is why I chose it was because it is one of the least expensive flower in the market. एक बार मैं कलकत्ता गया था, दिल्ली में हम लोग खरीदते थे इसकी एक स्टैंड ₹2 की ₹3 की. मैं कलकत्ता गया था, बहुत साल पहले की बात है. तो वहाँ पे मैं मार्केट में गया, मेरे को किसी ने कहा था कि रजनीगंधा लेते आना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है. तो मैं वहाँ मार्केट में गया तो उसने बोला कि ₹3.5. तो मैंने कहा तो दिल्ली से भी महंगा है. But what they were selling was ₹3.50 a dozen, as compared to what I was paying in Delhi for each stem, they were selling in dozen. Now that is because there was more of production there. Now that is also to guide you as to you have to choose your product. I'm not going to say cut flower. Cut flower may be several products. You choose your product wisely and then focus on that with the marketing view. इंडिया में लेडीज लगाती हैं ना, वो इसका बनाते हैं. हाँ, इसमें खुशबू होती है ना जी. नहीं, जो बाल में ना वो. नहीं, वो तो जैस्मिन ज़्यादा लगाती है. जैस्मिन ज़्यादा लगाती है, ये भी लगाती है. ठीक है, ये भी लगाती हैं क्योंकि इसमें खुशबू होती है तो वो अच्छा लगता है. इसमें पहना हुआ है उसको भी अच्छा लगता है, जो उनके सामने है उनको भी अच्छा लगता है.
Floriculture has always been considered as a fashion industry. I would say not always, particularly not in India. It depends on the country's situations and the circumstances there where it is interested. This particular picture you will notice that the lady in the picture is wearing garments made of only plants or flowers. Now that shows that one की भी हम फूलों से अपनी शर्म भी ढक सकते हैं. There are about 170 countries which are engaged in floriculture. India is only one of them, and India is ranked at number 50 or something. So ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत आगे हैं, अभी हमारे पास बहुत रास्ता है कवर करने को floriculture में. As I said earlier, that it has got a lot of aesthetic value, but besides that, there is a lot of economic value also. अगर वो नहीं होता तो सिर्फ खूबसूरती के लिए इन लोगों का करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट नहीं मिला होता, because उसमें कोई इकोनॉमिक वैल्यू है farmers and others. That's why it is there. हमारे जहाँ तक हम लोग का इंडियंस का कंसिडरेशन है, it has been part of our culture right from the beginning. जब हम लोग के यहाँ बच्चा पैदा होता है तभी भी फूल देते हैं, जब वो विदा होता है तो तभी भी हम लोग फूल चढ़ाते हैं. So flowers we have been associated right from the beginning of our life till the end. And festival and wedding, even I had said, because हमारे यहाँ पे ऐसा क्या है कि बाकी देशों में I have traveled across the world and I have seen the countries which are number 1 or number 2 in floriculture, which are in Europe or USA for that matter, वहाँ पे लोग अपने लिए फूल खरीदते हैं. हमारे देश में हम लोग अभी तक अपने लिए खरीदते हैं, बहुत कम खरीदते हैं. अभी शुरुआत होता हम लोग लोगों के लिए खरीदते हैं कि उसकी शादी है तो उसके लिए बुके ले जाओ, उसका बर्थडे है तो उसको फ्लावर दे देते हैं, एनिवर्सरी है व्हाटएवर. सो हम लोग अपने लिए जब तक अपने लिए नहीं खरीदना शुरू करेंगे तब तक हम लोगों का ग्रोथ उतना बढ़ेगा नहीं. This particular slide I am showing only because if you see the number 2 column, उसमें इंडिया नंबर 3 पे था, and it is expected by 2050 we will be number 1 in floriculture. Now this is, I would consider it, even though it was a very valid report, but I still consider it as a dream कि भाई हम लोग कभी भी लीड करेंगे floriculture को, because I personally believe, that is my personal belief, that we can do it because we have that kind of potential in our country, because India is not a country, it's a continent. जो चीज़ एक जो कंट्रीज हैं उन सब कंट्रीज को मिला दो तो हमारे पॉपुलेशन से उनका पॉपुलेशन कम हो जाता है, हमारे एरिया से उनका एरिया कम हो जाता है. एंड I was traveling to Netherlands, which is considered as number 1 in terms of exports, but they are largely re-exporting because they are getting from all over the world and then re-exporting to the markets. तो वहाँ पे मैं गया था तो वो once I had a discussion with somebody who was a consultant with one of the leading Dutch companies, and उन दिनों में हमारे इंडिया में एक्सपोर्ट शुरू हो रहे थे. तो वो मेरे से जानना चाह रहा था कि what he wanted to know was what is the scale of operations which you will have. What they were worried was कि India is such a large country with so much of resources, तो हम लोग तो बंद हो जाएगा, हमारा फ्लोरिकल्चर बंद हो जाएगा. बट मुश्किल ये थी कि उनको फॉर्चुनेटली उनको ये मालूम नहीं था कि हम लोग की अंडरस्टैंडिंग फ्लोरिकल्चर के बारे में और फ्लावर्स के बारे में और इसकी वैल्यू के बारे में अभी उतनी नहीं जागृत हुई है जितनी होनी चाहिए. Next one, please. This is just some figures and this is largely to show you कि जो सबसे पहला वाला है 48% इसमें, that is Netherlands, 17% is, it should be Colombia. Colombia, third is Ecuador, it was on the hill gas slide. So the figures are not important, it is important that what are the countries which are considered to be in the top group right now. Next one. Now these are the global leaders for imports. Again, it's just a question of figures, but then imports के हिसाब से USA, followed by Germany, and then by UK, by Netherlands, and then Russia and others. Now this only shows that USA is such a large country,
और वो लोग फ्लावर्स लेते हैं नेदरलैंड से, हमसे नहीं लेते डायरेक्टली। अब शुरू हुआ है and we are exporting a lot of stuff to USA directly because they realize that they can cut down on their cost of imports if they take from us directly. And in terms of, because Indians का सबसे जो बड़ा होता था तो शुरू से आता आ रहा था कि क्वालिटी में हम लोग मार खा रहे थे, क्वालिटी में हम लोग मार खा रहे थे because let us be frank, हम लोग शुरू से ही थोड़ा सा चीटिंग करने के में वो स्टार हैं। तो जैसे कि सेब की पेटी आती थी कश्मीर से या हिमाचल से, तो हम सबसे पहले चेक करते थे सबसे नीचे वाले लाइन में भी वैसी क्वालिटी के सेब है, उसके ऊपर है कि नहीं है, बिकॉज हम लोग जरा शक्ति मिजाज के हैं एंड वी यूज्ड टू नेवर बॉदर अबाउट द क्वालिटी एस्पेक्ट। हमने ज़्यादा प्रोडक्शन किया, हम सोचते हैं कि ठीक है, बट देन एट द सेम टाइम व्हाट यू वुड नीड टू रिमेंबर इज यू डोंट नीड अ बिग कस्टमर एट वन टाइम, you need repeat customers. Maybe they may be small ones. कल को आप कोई भी enterprise शुरू करें, आप सोचेंगे कि भाई ये मेरे पास टाटा मोटर आ गया है, अंबानी आ गया, अदानी आ गया, तो उसको इतना जितना दे सकता हूँ बेच लूँ। No. See, it is all right. They can give you more money now, but tomorrow if they are not satisfied with your quality, or if they get somebody else to supply at a lower rate or whatever, they will simply drop you, and then you will have no business. So please remember one thing, you need to focus on the quality and other aspects along with the next one please. This one I wanted to show you particularly, ये देखिए आप कहेंगे 2015 की स्लाइड दिखा रहे हैं, कि इसमें तो सेकेंड कॉलम जो है उसमें 2015 के फिगर्स हैं। I will also show you a slide of 2009. I'm sorry but just to stress this point, इसमें आप देखेंगे ना कि जो 2005 में जो कंट्रीज 25% ट्रेड ले रही थी, वो 2015 में 44% ट्रेड में। तो इसका मतलब यह है कि सिचुएशन बदलती रहती है। पहले वाली स्लाइड में जो इस साइड पे हैं 2005 वाले में, उसमें इजराइल का नाम देखेंगे, इवन दो इट वाज 1% ओनली, एंड इजराइल वाज वन ऑफ द मेजर कंट्रीज जो हम जानते थे एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर, which are a big exporter, with 1% share in the world market. And in the 2013, Israel doesn't figure anywhere because the other countries took over. Ethiopia took over. Kenya increased its size from 7% to 5% to 11%. Right. Next one, please. These are the marketing channels. I'm just trying to introduce you to floriculture. We will talk about Indian floriculture a little later, but at this time, global. And I want to introduce us to what is the scenario right now in the world. Now इसमें आप एक चीज नोट करेंगे, जो नीचे से थर्ड कॉलम है, that is supermarkets. हमारे यहाँ जो फूड बिकता है कहाँ बिकता है? रोड साइड पे बिकता है, फ्लोरिस्ट शॉप्स पे बिकता है. They are still the biggest consumer of all marketing head under flowers and plants. इस साइड में कट फ्लावर्स का है, उस साइड में पॉटेड प्लांट्स का है। दोनों में आप देखेंगे नीचे तो चाहे वो रिटेलर्स हो, चाहे फ्लोरिस्ट हो, चाहे गार्डन सेंटर्स हो या जो भी हो, they were the biggest. But in between now, particularly for cut flowers, आप देखें the first column on the left, that is the UK. वहाँ पे major cut flowers are being sold in the supermarket. Now supermarkets में advantage ये है कि you go to buy, let's say you go to buy a shirt for yourself, and then you see some nice flowers, so you also pick up flowers from there. You're not going there for flowers. So that kind of a sale is being limited there. Supermarkets में क्या होता है, आप जो भी चीज़ खरीदते हैं, उस पर एक expiry date लगी होती है. When I went abroad and I went to a supermarket, and I just asked them as to this flower will, how many days will it last? तो उन्होंने कहा कि एक हफ्ता चलेगा आपके पास. So I was not very sure about it. The next time I went to there is always every year somewhere in November there is a international horti expo in Netherlands. So I've gone there 4 or 5 times mainly to learn new things there. The next time I was there, I asked those people around. Then they say that now we are breeding flowers with a vase life of at least 12 days.
हमारे यहाँ पे जब गुलाब आम लेते हैं मार्केट से तो 3 दिन के अंदर मुरझा जाता है. Even in Delhi climate, which is cooler in the winter months when the roses are available, it doesn't last for more than 4 or 5 days or a week or whatever. But उन्होंने कहा कि roses we are breeding for a half life of 12 days. उसमें 5 दिन हमारे शिपिंग में लगेंगे to reach the supermarkets और वहाँ पे भी guarantee that it will be there for 7 days. Roses का 12 days half life guarantee करना, it is only because you want your flowers to be sold in certain markets. Now that's how it is. अब बाकी में देखेंगे बाकी countries में भी whether it is Russia, Netherlands, France, वहाँ पे भी शुरू हो गया है. These are the old figures, but then what I only want to show you there are multiple channels of marketing also. It is not that you can buy flowers only by going to a flower shop. Next one, please. Rose today continues to be number 1 in the world. This particular slide I am showing you only, this is also an old slide, but I have included it only because, see, if you see the first line, Netherlands we talk about, they have been a major producer of roses. वहाँ पे 10 साल में 2001 से 2011 में there was a 50% drop in the rose production area. So that area, that produce has to come from somewhere else. So India has got an opportunity that way because of our climatic conditions that we can fill up those gaps which are happening in all across the world. Now this area was, Kenya is now 2,000 hectares. It is old figures now, it must be double of that area. Largely because वहाँ पे Kenya में क्या हुआ? Kenya is also a very small country. I have seen the farms there, but one thing which I was impressed was in Kenya, the farms which we visited were 10 hectares farms. India में export farms थे, at that point of time maximum area was 5 hectares. और वो भी बंद हो गया 2 साल के अंदर. बाकी जगह में जहाँ था 2 हेक्टेयर में 3 हेक्टेयर के ग्रीन हाउसेज में प्रोडक्शन होता था. वहाँ पे जो हमने फार्म्स विजिट किए वो स्मॉलर फार्म्स थे, वो 10-10 हेक्टेयर के थे, बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव ए लार्जर एरिया ऑफ प्रोडक्शन. इथियोपिया 2005 में 100 हेक्टेयर्स था वहाँ पे, अब वहाँ पे 1000 हेक्टेयर है. अब अगेन इट इज नाउ डबल मोर, इट मस्ट बी मोर देन 2000. इंडिया में कितना एरिया है? इफ आई आस्क एनीबॉडी, आई हैव sources for information all across the country, but today also I cannot say with certainty कि हमारे यहाँ पे रोज 50 हेक्टेयर में होता है, यहाँ पर 5000 हेक्टेयर में होता है. I cannot say that because everybody, because हमारे यहाँ पे I will come to that later, and globally 200 million roses were planted annually. Now इतने सारे रोज प्लांट्स जो कहाँ से बन के आते हैं? तो हमारे इंडिया में भी तो हमारे रोज प्लांट्स बनते हैं और बिकते हैं, लेकिन अभी भी हमारे में उतनी वो समझ नहीं आई है, उतनी इंटेलिजेंस नहीं आई है, उतनी अकल नहीं आई है कि हम लोग उसको एक तरीके से मार्केट करें. नेक्स्ट वन. दिस पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो आई वांटेड टू शो यू, बिकॉज आप ये मत समझ लीजिए कि मैं गुलाब उगा रहा हूँ तो मैं उसको यूएसए में भी बेच लूँगा और केन्या में भी बेच लूँगा, कहीं भी नेदरलैंड में भी बेच लूँगा. नो, it doesn't happen like this. Now this is only from one of the companies. There is a Rosen Tantau company, breeders. उनकी ये publication में था ये कि the first variety Kontiki is good for Africa region. The second variety, the Trust, is good for Latin American region, and also ideal for the countries which, I'm sorry, this right was a country here, पीछे से, also in countries like Russia and others. जो लास्ट वाला है, that is for the Europe. अब उनका जो फ्लावर है, वो देखेंगे कि more or less उतना ही प्रोडक्शन होती है, लेकिन उनकी वाइल्ड लाइफ किसी में 11 दिन है, 11 से 13 दिन है, किसी में 12 से 14 दिन है, जो लास्ट वाला यूरोप के लिए है 12 to 14 days. This is what I was mentioning. सुपरमार्केट्स में दे गारंटी 12 days. तो उस तरह से है कि हर एक एरिया के लिए हमको अलग तरीके से ब्रीड करना होता है, वो रोज ग्रो करने पड़ेंगे हमको. हमारे लोगों ने रोज ग्रो करने शुरू किए इनिशियली, दे वर मेनली फॉर द यूरोप मार्केट, डच मार्केट, बिकॉज डच वाज द लार्जेस्ट इंपोर्टर. तो हम लोग वहीं से प्लांट
प्लांट मंगा रहे थे, हम लोगों को वो लोग वही भेज रहे थे कि जो वैरायटी उनको चाहिए, और हम लोग उसको ग्रो करके भेज रहे थे विदाउट रियलाइजिंग दैट वी हैव आवर ओन वैरायटीज व्हिच कैन compete with them, and but we have still not worked on promoting those. Next one, please. Now let me talk through a couple of slides about the present major factor in the floriculture development in the world, that is sustainability. Now everybody is concerned about the environment, and जब हम लोग floriculture करते हैं ना, तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव कार्बन है इसमें, in the sense कि our flowers are nowadays जो होता है कि जैसे इंडिया से जा रहा है या कीनिया से जा रहा है नीदरलैंड में, कोलंबिया से आ रहा है, इक्वाडोर से आ रहा है नीदरलैंड में, और पहुंच जाता है फ्लावर्स, अफ्रीका से फ्लावर्स आते हैं नीदरलैंड में या कहीं पे आते हैं, लेकिन but they all come by air, where we are polluting the environment and we are giving so many of carbon credits negatively. Now अभी पिछले around 2005 के बाद लोगों ने सोचना शुरू किया, जब environment concerns आए कि भाई we should start shipping. पहले आप समझते थे कि जहाज में जाएगा तो 15 दिन तो जहाज में रहेगा, तो कैसे उसको वो करेंगे? But then people developed the technology for it to survive the sea journey of longer periods. And इसमें जो दिखाया है कि these are the crops. See, this is the reduce the cost by almost 60%. उससे कितना फर्क पड़ जाएगा कि अगर 60% कॉस्ट कम हो जाती है, एक जो बायर है उसको मिलती है, तो what he can earn by selling it at whatever price. Crops में there are all the major crops and the plants, the foliage plants, and they can be shipped through the sea route. And इसमें देखिए नीदरलैंड टू रशिया, and नीचे देखिए कि उसमें इक्वाडोर टू नीदरलैंड, कोलंबिया टू नीदरलैंड, these are long distances. But वहाँ से भी हो रहे हैं, और ये these consignments are going. All these large ships are taking the flowers and plants across the world. हमारे यहाँ पे भी ports हैं, हमारे यहाँ पे भी sea route है, open है, and we can do it. That's just a very big opportunity. But we need to standardize the protocols, the processes for sending it by sea. Next one. This is another related to the sustainability angle. This is for the environment. This is here you will see that these are solar panels over the greenhouses. Production हो रहा है, solar panel लगाए हैं. Only 3,500 square meter area is good for a 10-hectare farm. It's not a big thing, but somebody did research and standardized this, that this is what you need. Having solar panels for your covering the thing that reduces humidity by 15 to 20%, production increases, there is better disease control and improved quality of the produce which you plan to produce. ये सब चीजें हम लोग पहले से सोचते थे कि ये होना चाहिए, लेकिन अब हो रहा है ये, and now many countries are insisting on this. Next one. Now this is again the substrate cover. हम लोग यहाँ के हमारे यहाँ पे मिट्टी बहुत है, अभी हमारे देश में भी शुरू हो गया है. When the exports of flowers increased, started from India in the late 90s, तो उस टाइम में there were some companies, they were insisting कि हमको मिट्टी का नहीं चाहिए, because soil is the biggest carrier of diseases. तो वो उन्होंने कहा कि हमको तो एक सबस्ट्रेट ऐसा चाहिए जो कि इनर्ट मीडिया हो, और परलाइट है या वर्मिकुलाइट है जो भी है, या कोकोपीट है. कोकोपीट के देखिए आप कितने कोकोपीट है, फाइबर है, क्वायर है, रॉक वूल है, सैंड, सॉडस्ट, राइस हस्क, परलाइट. अब देखिए इसमें से आप देखेंगे कि सॉडस्ट, राइस हस्क, सैंड, ये सब तो हमारे देश में इतना मिलता है, तो क्यों नहीं करते हैं? But I was very happy that when I was beginning my work in floriculture, so at one time we were struggling with the routing of cuttings. I had a chance to go to Ludhiana. वहाँ पे मैंने देखा, उन्होंने कहा कि हमने तो राइस हस्क में किया है, क्योंकि हमारे यहाँ पैडी बहुत ग्रो होता है, तो राइस हस्क is available in plenty. तो राइस हस्क में किया है, and it is giving better results than the other things. Now it is a question of trying out certain things
and select what is to your advantage. बाकी जगह में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, that's not important. But what is important for you? Tomorrow, if I want to produce something, start an enterprise where I want to produce something, I want to reduce my cost to the minimum and increase my profits to the maximum. Now, उसके लिए हम लोगों को इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा. ये substrate culture से जो दिखा है इसमें significant reduction in soil-borne diseases, saving of water and fertilizers and improved plant architecture. तो plant growth होती है वो भी state आती है. हमारे मिट्टी में तो हम लोग देखते हैं ना, हम लोग गार्डन्स वगैरह में जाके कि एक ब्रांच इस साइड को जा रहा है, एक ब्रांच उस साइड को गिर रहा है, तो वो सब चीजें कंट्रोल में आ जाती हैं. These are the ways to control. Next one. This is another thing which has started, I think, in the last 10 years or so. This is artificial lighting. What we realized was हमारे देश में तो बहुत धूप होती है, so we have plenty of light. Whereas in other countries like Europe and others, they are short of light. So they were doing artificial lighting as an additional lighting. But soon they realized that if they select the spectrum of light which is required by the plant, उसीलिए आप देखेंगे इसमें जो red light नजर आ रही है ना, तो red spectrum they chose. And LED lighting या high sodium lamp जो sodium lamp होते हैं वो भी उन सब से करते हैं. अब इसमें से customized crop specific packages. There are companies Philips ने शुरू किया था ये LED for you. तो उन्होंने कहा कि अगर आपको रोज लगाना है या कमीशन लगाना है, we will give you the package. कि कितने लाइट्स कितने डिस्टेंस पे आपके लाइट्स लगेंगी और उससे कितना बेनिफिट होगा, so that people can work it out कि भी उसमें से क्या होना है. Better quality, less. हमारे देश में तो उतना नहीं होता है, लेकिन all over the western world, यूरोप में या US वगैरह में जहाँ पे भी है, वहाँ पे there is a temperate climate. So when they produce flowers, they have to heat their greenhouses, and heating the greenhouses requires more energy than cooling the greenhouses. हमारे देश में जो हो रहा था पूना में या बैंगलोर में या हैदराबाद में या दिल्ली के आसपास, तो उसमें we have to cool the greenhouses by having fans and other things. और उसमें उतना खर्चा नहीं आता है एनर्जी का, उसमें लेकिन the energy requirement in Europe and other places to heat the greenhouses is much more. It is something new. You may have studied this, but उसका implication कहाँ आता है? अब देखिए इधर artificial lighting आ रही है, तो उसका एक थोड़ा सा added cost होता है, but at the same time it improves the yield significantly. This is biodegradable pots. Now एक तरफ एक plant paper है, एक LED pot जो है, this is also a trademark of a company, and they are also bringing up one paper. I was very happy yesterday when Dr. Nasky mentioned to me that they are getting a unit in the university which will manufacture these paper pots. और उसमें cuttings लगाएंगे. Because these are biodegradable, and so उससे क्या होता है कि they are good for the environment. Next one. Next one. Now this is very very important. हमारे देश में तो सब कुछ चलता है, मार्केट में जाते हैं. अब जैसे आप कोई भी चीज ले लीजिए, आप forget about floriculture. You talk about tomatoes. I went to the market, तो उसने मुझे बोला कि ये 40 रुपए किलो, ये 30 रुपए किलो, ये 20 रुपए किलो, ये 10 रुपए किलो. अब 3 दिन पुराना होगा तो 10 रुपए किलो बिकेगा. सब कुछ बिक जाता है हमारे देश में और हम लोग खरीद लेते हैं. Generally हम लोग के साथ क्या होता है कि whenever we go to the market, we want to spend less money and buy more stuff to bring home. उससे sometimes we compromise on quality, but in floriculture you cannot compromise on quality, particularly if you are feeding the world. And these are various labels, as I call them. These are, you have to comply with all these labels. जो कीनिया फ्लावर काउंसिल का मैंने लास्ट में दिया है राइट हैंड साइड में बॉटम में, दिस इज बिकॉज कीनिया में जो फ्लावर ग्रोवर्स हैं उनका एक कीनिया फ्लावर काउंसिल है which regularly works with the government to design the policies to help the farmers. हमारा देश इतना बड़ा है and हमारे देश में let us accept it. Agriculture is a state subject. It's not a federal government subject. तो उससे क्या होता है कि हर एक स्टेट अपनी पॉलिसी बनाता है.
तो उससे हमारे को थोड़ा नुकसान होता है. But Kenya में the Kenya Flower Council work can work with the government. I have worked in the Ministry of Agriculture और उस टाइम में भी मैं कहता था और अभी भी जब भी मैं जाता हूँ वो लोग कहते हैं कि आप लोगों के प्रेशर ग्रुप्स नहीं है, फ्लोरिकल्चर के प्रेशर ग्रुप्स नहीं है. But if there is a J&J Flower Council or something like that, they can take your challenges which you are facing to the government and get the policy designed accordingly. Next one. हम पैकेजिंग कैसे करते हैं? मैंने वो स्लाइड्स नहीं डाली बिकॉज उससे बड़ा दे आर वेरी डिप्रेसिंग कि हमारे यहाँ जिस तरह की पैकेजिंग होती थी पहले, अब तो शुरू हुआ है. पहले हम लोग उसको टोकरी में भर के फूल बेच सकते या टोकरी में, ये तो गोली में. अभी भी दिल्ली मार्केट में जो सबसे बड़ा मार्केट है देश का, अभी भी गाजीपुर मार्केट में वो गाइडर्स के रबर बेस्टर्स वो जो बोरियों में लपेट के उसमें बेचते हैं और अखबार में लपेटते हैं बंडल गनी बैग्स, फिर उसको गनी बैग्स में डाल के बेचते हैं. और अभी जो होता है कि अभी कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनने लगे हैं स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर क्रॉप. पहले जो ग्रेटर्स वगैरह होता था जो लंबे लंबे स्टेम्स आती थी वो किस में आती थी? जो ट्यूबलाइट के एम्प्टी बॉक्सेस होते थे वो लोग परचेज करते थे मार्केट से. ट्यूबलाइट के एम्प्टी बॉक्सेस उसमें हवा डाल के बेचते थे. अभी भी एंथोनियम्स वगैरह वैसे आते हैं हमारे देश में, लेकिन वो दैट इज फाइन. बिकॉज दिस पर्टिकुलर स्लाइड इज I have been using it for my students for the last almost 15, more than 15 years. Now this is only to show that at that particular time when Derbara became an important crop, the Derbara breeders themselves started working on how to package it. Now these are the specific packages meant for Derbara. आप इसका साइड में मैंने जो दिया है साइड में पूरा खोल के दिया है. You will realize that there is a lid, there is a collar, there is a material, there is a bag which contains water, and there is a base in which the stems be there. Because Derbaras have a hollow stem, they cannot take much water for a long time. They cannot retain water. तो उसके लिए उनको इस तरह से करके भेजने में to the market standing. Because actually you हमारे देश में जो आता है दरबरा वो ज़्यादातर वो बॉक्सेस में आता है. उसमें क्या होता है तो उनकी क्वालिटी इफेक्ट हो जाती है. जब यहाँ पे वो when they go standing और particularly यूरोप में मैंने देखा in one of the trucks which was leaving the Alsmeer, the Netherlands market, the main market है, it was leaving for Germany. So they showed me all these boxes were put in containers and those containers were in the truck. So all the flowers will go standing, drinking water all the time. So they will arrive in a much fresher condition than what we get here. Next one. This says size matters. Size does matter because whatever enterprise you start, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि in Kashmir we have small farmers, वो एक कनाल में दो कनाल में लगाएंगे इतना लगाएंगे. But then here the challenge will be to get them, put them together. ये सब चीजें size is important to recover the cost and to have a return on investments which you make. Next one, please. This is why I said while big size of farms is necessary for consistency and better return on investment, it is not possible everywhere. उसके लिए मैंने नीचे एग्जाम्पल दिए हैं. एक जायका का प्रोजेक्ट था, उसमें there were group of 700 small farm cooperatives help farmers market the produce together. Kenya Flower Council lobbies with the government for policies to support both small and big farmers. The small farms in China and several other countries do this. Qualification is necessary because होता क्या है कि हमने 4 लोग ने इकट्ठे किए. नास्की साहब का फूल आया, उनका क्वालिटी A ग्रेड है, मेरा क्वालिटी B ग्रेड है, तो उसको मिला दिया उसके साथ में, तो उनकी भी प्राइस मिल जाएगी. So what we have to do is when we are consolidating the flowers and sending it out, we have to be very, very clear that consolidation has to be done in a manner that we send the same quality. नहीं तो because क्या होगा अगर मेरी quality poor होगी, पूरा consignment reject हो जाएगा. Next one. Now let's talk about the situation in our country. Now this is not a complete list of the product range we have in agriculture. सुबह हमने बात की सिर्फ एक फ्लावर सीड्स, वो जो मैंने
साथ में 8वें नंबर पर लिखा हुआ है फ्लावर सीड्स एंड सीड। उसके बारे में हमने बात करूँगा, उसके बारे में हमने सुबह डिटेल में बात की एंड आई कुड सी दैट सेंस दैट सम ऑफ द पीपल वर वेरी एक्साइटेड कि हम भी फ्लावर सीड ग्रो करेंगे एंड वी विल कैप्चर द मार्केट। द थिंग इज फ्लोरिकल्चर इज वेरी बिग। You have a chance to select the crop or product of your choice कि आप क्या कर सकते हैं। हर एक आदमी हर एक प्रोडक्ट नहीं कर सकता। किसी के पास 1 कनाल का एरिया है, किसी के पास 5 कनाल का एरिया है, किसी के पास ज़्यादा, तो वो क्या ग्रो करेगा जिससे कि उसको रिटर्न अच्छे मिले। मैं इस बात में बिलीव करता हूँ कि जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी को करोड़पति बनना है, जरूरी नहीं है। मेरी इनकम आज 10,000 रुपया है, पर जो मेरे को 15,000 मिलते हैं तो आई शुड बी वेरी हैप्पी दैट आई विल एबल टू इंक्रीज माय प्रॉफिट्स फ्रॉम द रिटर्न फ्रॉम द piece of land. Now that is very very important that you decide what you want to do based on the. Now Karflawa I have said enhanced forestry. पहले हमारे ज़माने में जब हम किए थे floriculture, let me share with you. I was a student of vegetable breeding. I did my masters and PhD in vegetable breeding, and उसके बाद floriculture में आया because there was a position in floriculture division, and then I developed a liking for flowers and floriculture, and उसके बाद I did not look back. पिछले 40-45 साल से मैं floriculture से जुड़ा हुआ हूँ, and I still love. तभी मैंने नाथ के सामने जिस दिन कहा था कि आप आएंगे हमारे कश्मीर में, तो मैंने कहा बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊँगा। Unfortunately, I got a very short notice, so I came for a short time. But then I'm very happy that I came because now I'm seeing that my floriculture family is increasing, improving. आप सब लोग कल को कोई ना कोई floriculture product grow करते हो, तो उससे बढ़िया मेरे लिए कोई बात नहीं हो सकती। Flowers में पहले हम लोग बात करते थे सिर्फ गुलाब है, roses, gladiolus, tuberose, maximum carnation, chrysanthemum, etc. उससे अलावा हम नहीं बोलते। Now the range has increased. I will tell you little later. Then we have loose flowers which we have been using for centuries. जो माला बनती हैं, गेंदे की माला बनी है, किसी की माला बनी, जो हम लोग गले में डालते हैं या हेयर डेकोरेशन के सामने का उसके लिए होते हैं, यूज होते हैं। Potted indoor plants, sale and trends. इसमें जो I would like to you to pay attention to the renting part. Lot of people are there who cannot sell plants, but they can rent. I started this thing at one time with a friend of mine, and I was very happy, but I felt very bad when we had to leave it because he moved out of Delhi, and I did not want. I was working with the government, so I did not want to leave my job and start take it on my own. We were renting out plants. There are a lot of corporate offices, they don't have the space to grow their own plants, and they felt that every time we buy plants from the nursery, it costs a package, and then after a few days they die. उन plants को कैसे maintain करना है, उनको कुछ दिन के बाद बाहर लाना है, हवा दिखानी है, जो भी करना है, all those things they should do. We have for each location we have 3 sets of plants with us. किसी को यहाँ 10 प्लांट चाहिए थे, किसी के यहाँ 100 प्लांट चाहिए थे, उसके हिसाब से हम लोग करते थे renting, and if the rent was at that point of time, I'm talking about almost 20 years, 25 years back. उस टाइम में it was 1 rupee to 10 rupees per plant per day, the rental. तो अब आप सोच लीजिए कि अब वो बढ़ के 10 गुना तो कम से कम हो गया होगा। अगर एक प्लांट का मुझे एक दिन का 10 रुपये मिलता है तो एक महीने का 300 रुपये मिलता है। So I have to maintain a good quality of the plant and supply them regularly so that because people use it for decoration in their offices or premises, whether it is the hospital or whatever. कहीं पे वो उसको decorate करने के लिए लगाना है, and it loses its decoration value in the sense that it is not looking as nice as it should be looking. So then we don't want to continue, and everybody doesn't want to purchase plants. वो मर जाए उनको कहाँ फेंके? That also becomes a headache at times. Landscaping plants, including bedding plants, I have mentioned purposely because जो landscaping में plants use होते हैं, flowers use होते हैं. If you take up the US agriculture
ब्रेकअप। इस फ्लोरिकल्चर का अगर आप देखें चार्ट देखें उनका, उसमें सबसे नंबर 1 पे आता है, आफ्टर कट फ्लावर्स नंबर 2 पे आता है वेडिंग प्लांट्स। तो उनके लिए जो गार्डन वगैरह के लिए होता है, जो आप लोगों के लिए, जो आज आपको चीफ सेक्रेटरी ने बोला है कि श्रीनगर शुड लुक ब्यूटीफुल विद फ्लावर्स एंड like that. Those are the wedding plants which we will be requiring. Interior scaping, I will show you a slide. Interior scaping is in Pakistan. This is interior scaping example. You have put a bouquet here and it is looking nice. It is brightening. Cut foliage, cut greens. हम लोग पहले ध्यान नहीं देते थे, and but now it is becoming a huge trade. Sri Lanka is a very small country. I visited some of the farms in Malaysia, which was a large exporter of cut foliage plants. And I was surprised. मैंने वहाँ देखा, मैंने कहा इसमें नया क्या है और उसमें बढ़िया क्या है? हमारे यहाँ पे तो इससे बहुत बढ़िया है. But then the thing was, we were not doing it because nobody guided us to take it up and do it. Sri Lanka, somebody came from there. He was a foreigner. He was settled in Sri Lanka and he started doing it. He was a European by birth. तो उसने कहा कि I had seen cat foliage selling it in my Europe market for so long, for so high prices. So when I got a chance to invest some money, I invested into cat foliage. I don't grow cat flowers or anything, but I do grow only cat foliage. And he was showing me the catalog. It was very impressive. And उसमें से इसलिए ये था कि हम लोग वो चीज़ यूज़ करते हैं. अभी I will talk about it later. Then dry flowers. Dry flowers हम लोग बहुत सुनते हैं when we talk about our exports. Exports of floriculture products from India, 70% is dry flowers because उसमें perishability नहीं है. That is not a concern in dry flowers. And dry flowers, as of now, not even a single cultivated flower is dried and sold. Everything they are collecting from the wild. Now, वो भी 2 दिन के बाद forest में खत्म हो जाएगा, तो where we will go. So we need to start up our work. The research institutions have a responsibility to develop protocols for producing flower seeds and flower seedlings. Flower seeds के बात में किया है, उन्होंने बाद में थोड़ा सा mention किया था seedlings के बारे में. I will not go into the flower seeds. Flower seedlings की बात की थी, जो plus trace यहाँ पर रहते. Because what is happening is, when I buy a packet of seeds, it has got, let's say, 100 seeds. Let us say it's got 100 seeds. I don't need 100 seeds. My requirement is only for 10, 15, 20 plants. So I need only 20 plants. Why should I invest in a packet which is giving me 100 seeds? मैं 20 seed use करूँगा या 50 seed use करूँगा, बाकी thank you मैं. So it's a waste because per seedling cost is working out very high. So what I do is, instead I buy seedling. I got 10 pots, or if I need for my enterprise, those who are starting commercially, if they need only 1500 seedlings of a particular variety, only buy 1500 seedlings. The seedling cost will be higher than the cost of seed. जैसे भी कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सिंथेसिस के मैंने बताया आपके सामने 9,000 rupees per packet of 1,000 seeds. Each seed is costing 9 rupees, 10 rupees. अब उसके सीडलिंग लेंगे तो 25 रुपए से कम के नहीं आए. But at the same time, अगर हम 100 सीड का पैकेट देते हैं, उसमें से हमारे 10 जर्मिनेट होते हैं, 10 हम we are able to save. Then हमने पैकेट खर्च किया है, हमने 10,000 किया. So each seedling was also about 1,000 rupees for me. तो उसको अवॉइड करने के लिए people buy seedlings directly for their enterprise, whether it is a home scale growing or commercial growing or whatever. Third घास तो लॉन्ग में रेडी होती थी, तो हम सोचते थे कि वो गाय के चरने के लिए है. It's not so. Nowadays, the golf courses are increasing. हमारे इतने सारे क्रिकेट फील्ड्स हो गए हैं, हर एक में ग्रास रखी है और हर एक जगह वो घास लगाने लगा है. तो it will take them 3 days to develop it. और जो भी आप किसी भी गाँव में जाके देख लीजिए, आपको वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी बहुत कम नजर आती है. Whereas now the trade is for uniform fields, because क्रिकेट में भी कहते हैं ना, जैसे पिच में करते हैं वैसे कहते हैं आउटफील्ड बड़े स्लो है, आउटफील्ड फास्ट है, and all these kind of things.
So उसके लिए भी काम कर रहे हैं show you. Vertical garden, you don't see it much here. There is plenty of scope here जो आपके जो flyovers वगैरह बने हैं उनके terraces पे. In all the metros, whether it is Delhi, Bangalore, Mumbai or Kolkata or whatever, तो सारे के pillars के देखेंगे आप, they have decorated the pillars with plants. उसमें से भी जो एक challenge होता है उसका irrigation का challenge होता है. If you have the irrigation system worked out, then absolutely no problem. There is so much of market. Planting materials, both conventional and micro propagation. I will show you a slide here. Conventional मतलब है कि जो हम लोग planting material बेचते रहे हैं, जो हम लोग produce करते रहे हैं और बेचते रहे हैं. Micro propagation में हम tissue culture and other biotechnology. And we were discussing yesterday about the through seed coat research for the property किया जाए और through biotechnology so that we can reduce the cost per seed when you go to the market. Nutraceuticals and pigments, I will talk about it later. But then we had these are the new areas we never thought about it. मैंने एक बार ये पिक्चर देखी थी, आप लोगों ने भी देखे होंगे किसी ने मानसून वेडिंग, बहुत पुरानी पिक्चर नहीं है, हमारे एज की नहीं है, मानसून वेडिंग देखे होंगे उसमें एक कमरा था जो डेकोरेशन था वो आपको करीब 10 होता था वो भूल जाता. So I was wondering why is he eating a marigold flower when he is 10? So there must be some benefits out of it. And we realized that it was so because lot of flowers have got lot of things which are of nutraceutical value. Next one. Next one. In terms of area, we have more than 3 lakh hectares. Now this is what was worrying the Dutch consultants when they came to India to start the export-oriented projects. उन्होंने सोचा कि हमारे यहाँ तो 1000-2000 हेक्टेयर एरिया है फ्लावर्स का और उन दिनों में हमारे देश में 60,000 हेक्टेयर वाज द एरिया. तो उन्होंने कहा 60,000 हेक्टेयर, बट उन्होंने ये रियलाइज नहीं किया कि हमारे पास ना तो टेक्नोलॉजी है ना उतनी अच्छी टेक्निकल बैकस्टॉपिंग थी हमारे कि जो हम बता सकें फार्मर्स को. एंड फार्मर्स लोग ग्रो भी करते थे तो वैसे ही ग्रो करते थे अपनी मर्जी से. यहाँ जो हमारे देश में चला आ रहा है फार्मर्स का, that will not work for floriculture if you want to make an enterprise out of it. हमारे यहाँ क्या होता है कि जो भी फार्मर है ना, suppose I am a rice farmer, so what I do is that I give the technology of growing the rice whichever way I am doing. Whether I am doing it 100% correctly or 80% correctly, I give it to my children or whosoever takes over from me. वो inherit नहीं कर सकते आप. Floriculture में there is a particular technology which you have to learn, which you may or may not be able to inherit from your parents, if they are in the same industry. Trade, अभी हम बोलते हैं, this is building for the cut flowers and something 15,000 crore का है. I personally believe that it is much higher. 10,000 crore का तो cut flowers का ही बोलते हैं. बाकी हर एक कंपोनेंट का जो मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया था आपको, आप उनको कैलकुलेट करें अगर, बिकॉज हमारे देश में डेटा नहीं मिलता है. बहुत ट्रेड है और वो हमारा इंटरनल ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं. एक्सपोर्ट नहीं हो रहा हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा. एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत है, देयर इज ट्रेमेंडस पोटेंशियल. मैं तो बाहर जाके देखा है. आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. अपेडा इज द एजेंसी व्हिच इज involved with the export of agricultural produce, including floriculture. उस टाइम में अपेडा में थे सीनियर अफसर, उन्होंने कहा कि भाई ट्यूबरोज हम क्यों नहीं एक्सपोर्ट करते. तो मैंने कहा उसका मेन कारण ये है कि इट्स वेरी हेवी ऑन वेट. Each stem of tuberose is much heavier than a stem of cactus, for instance, or any other flower. तो उससे क्या होता है कि हमारा फ्रेट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो उसने कहा कि इसमें प्लस वैल्यू क्या है. अगर डोमेस्टिक मार्केट में ज़्यादातर इसलिए बिकता है बिकॉज इट्स ए स्ट्रेट स्टेम, लुक्स नाइस, वाइट कलर इज वेरी पीसफुल, इट गिव्स यू लॉट ऑफ पीस, एंड द मेन थिंग वाज इट हैड गॉट लॉट ऑफ फ्रेगनेंस. नाउ आउटसाइड फ्रेगनेंस उतना नहीं है. आई विल टेल यू
Because I think in somewhere in 1980 or 81, उस टाइम में अपेडा भी नहीं बना था. अपेडा का एक प्रिकर्सर था, there was a committee. They invited some experts from outside, ITC के, International Trade Center से. उसमें से एक आदमी थे, उन्होंने कहा कि I'm interested in tuberose. तो मैंने उनको सजेस्ट किया उस कमेटी वालों को कि मैंने कहा आप इनको वेस्ट बंगाल ले जाइए. वेस्ट बंगाल में राना घाट कोला घाट एरिया है, वहाँ पे एकड़ से एकड़ सब होता है. क्योंकि जब मैंने उससे बात किया कि आपका ट्यूबवेल में क्या इंटरेस्ट है, तो उसने कहा आई एम फ्रॉम इटली एंड इटली वी हैव 5 हेक्टेयर्स ऑफ ट्यूबवेल्स. मैंने कहा बस. तो उसने कहा व्हाई डू यू से दैट. मैंने कहा बिकॉज इफ यू गो टू वेस्ट बंगाल you will find at least 500 hectares of tuberose. So the 500 hectares you are going tuberose, they have never seen it in the international market. हम नहीं भेजते. Largely because. And then one year जब इस साल वो बात हुई, उस साल में अपेडा का ब्रीफ था कि जब आप नेक्स्ट टाइम इंटरनेशनल एग्जीबिशन में जाएंगे हॉलैंड में, तो आप ट्यूबरोज लेके जाइए. I used to sit in their stall, अपेडा stall, and watch. अभी पूरा घूम के जब थक गए तो वहाँ के अपेडा स्टॉल में आके बैठ गए. And I was amazed how people like tuberoses, mainly because of its scent. Because वहाँ पे scented चीजें बहुत कम मिलती हैं. तो वो कहते हैं ना कि रोजेस में भी अब scent जा रहा है. That was only because रोज में एक चीज होती है, just to share with you, that the wildlife is negatively correlated to the scent. If it is more fragrant, its wildlife will be less. तो कई फैक्टर्स थे. अब तो फिर दोबारा से ब्रीडिंग शुरू हुई है फ्रेगरेंस के लिए इन द लॉन्गर वाइल्डलाइफ प्रोसेस. तो वो सब चीजें होती थी. नाउ वी हैव एनहांस्ड प्रोडक्ट रेंज. हमारे यहाँ जो पहले फ्लोरिकल्चर की बात करते थे, जब हम फूलों की बात करते थे, तो कई चीज़ों की बात करते हैं. फूलों में भी हम कई फूलों की बात करते हैं, सिर्फ रोज कार्नेशन क्रिसैंथेमम की बात नहीं करते हैं. Suitable climate and natural resources. As I had said earlier, India is a continent. Here we have all kinds of climates. Everything is possible here. जो भी चीज़ हम कहीं भी grow कर सकते हैं. Why is Kenya able to do so much of floriculture and they are now becoming leaders in exports? If we only look at the climate part of it, in Varsha Valley I visited, I realized that we have such valleys in India too. There are so many, several places in India where we have such climates. But the states concerned, they don't have a policy to promote floriculture in those areas. वो कहते हैं कि पहले आपको खाने को मिल जाए, उसके बाद हम फूलों की सोचेंगे. So there are various ways to look at how you take up an enterprise. Post-COVID, many youth embracing nature, particularly work from home culture जो आ गया है. अब हम लोग घर में बैठा रहते हैं, जो उस टाइम में जो था, तो people love having some flowers on their table. People love having some plants in their house. So उससे तो सारा कल्चर बढ़ा. और जो आज अल्लाह रखा साहब ने सुबह बोला कि उन्होंने सोचा था कि कोविड के टाइम में बढ़ गया है, पोस्ट कोविड कम हो जाएगा फिर से ट्रेड का, लेकिन दैट ग्राफ चार्ट इज गोइंग अप एंड अप. तो उससे क्या हुआ है कि भी नेचर की क्या वैल्यू है, प्लांट्स और फ्लावर्स की क्या वैल्यू है, ये हमने इन दिनों में थोड़ा सा ज़्यादा समझा है. When I say sunrise industry, this is not a term given by me, this was a term given by Government of India. When I went to the Ministry of Agriculture, at that time, late 90s, 1990s, उस टाइम में वो they were saying that India floriculture has got a lot of potential and things like that. And I tell you, उन्होंने जो foreign direct investment आ रहा था, because floriculture was in the open sector, that anybody can invest in floriculture in the country. And there used to be a foreign direct investment committee, FDI का, Foreign Investment Promotion Bureau. वो group used to meet every week. Every Saturday there used to be a meeting where the concerned ministry, agriculture ministry, had to propose, give a proposal कि भाई ये proposal है, इनका proposal है. जैसे नाथ के साथ ने प्रपोज किया कि मैं रोज प्रोड्यूस करूंगा, यहाँ पे करूंगा, ये करूंगा, कितना इंटरेस्ट, कितना इन्वेस्टमेंट ला रहा है बाहर से.
अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट ला पा रहे हैं तो उसके लिए अप्रूवल है। उस टाइम में मैंने देखा कि it was difficult because people used to send proposals and I was the person I had to examine and उन दिनों में हमने कम से कम 200 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को अप्रूवल दिया एंड मुश्किल ये होती थी कि लोग जो प्रपोजल बना के भेजते थे तो उसमें प्रपोजल में बहुत कमियां होती थी। सो एज ए टेक्निकल पर्सन आई यूज्ड टू फिल अप द गैप्स एंड उनको करता था और उन दिनों में मोबाइल का जमाना नहीं था। सो व्हाट वी हैड टू डू इज दैट आई हैड टू सेंड अ फैक्स टू देम और कॉल देम ऑन एसटीडी एंड देन गेट द आंसर्स फ्रॉम देम, गेट द उनके व्यूज क्या हैं तो उसको ट्रांसलेट करना टेक्निकली इन आवर प्रपोजल्स एंड थिंग्स लाइक दैट। And every week there used to be a meeting because there were so many proposals coming in. So that's why they were calling it a sunrise industry. Supporting government policies, central and state programs, why I say this is largely because central government has got a lot of policies. They are giving a lot of support. I was talking to Alaranka in the morning and I was told that the central government is giving to each farmer who is producing flower seeds, some of the areas, 35,000 पर है। तो उसने कहा कि 35,000 में उसका 2 महीने का लेबर का 14,000 पर मंथ लगता है, वो निकल जाता है और बाकी कॉस्ट निकल जाती है। बाकी सीड्स तो हम उसको फ्री देते हैं और प्लास्टिक मल्टीपल हम फ्री करते हैं, तो दे आर वेरी मच बेनिफिटेड। सो देयर आर लॉट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स थ्रू नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड एंड अदर एजेंसीज व्हिच गिव्स यू लॉट ऑफ असिस्टेंस व्हिच यू कैन cash on and then in various states also, the states have developed policy. The small state like Pondicherry, I was told that has got more than 10 schemes to promote floriculture in the state because that is also a tourist state now. So usko lihaz se dekh ke they want to invest in floriculture. Maharashtra, Karnataka, these are the major states which are investing and they are giving a lot of programs for floriculture development. Export potential not exploited. I would say it has been very जो हम लोग अभी बैंगलोर में conference attend कर रहे थे तो that was our under exploited crops. I would say floriculture as a sector was under exploited. We have not understood the value of it's a gold mine and we are sitting on the tip of the gold mine and without understanding. हम लोग ऊपर बैठे हैं gold mine के ऊपर, नीचे सारा gold mine है हमको पता ही नहीं कितना ज़्यादा उसमें value है और इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हैं हमारे को पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट के लिए। पुअर टेक्निकल बैकस्टॉपिंग अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में अब तो हर एक यूनिवर्सिटी में फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप आर्किटेक्चर का डिवीजन हो गया, पहले नहीं हुआ करता था। जब मैं ज्वाइन किया था हॉर्टिकल्चर तो उस टाइम में फ्लोरिकल्चर डिवीजन नहीं होता था। फिर वेजिटेबल क्रॉप्स के साथ वेजिटेबल and floriculture division, horticulture से vegetables floriculture आया, फिर उसके बाद में floriculture division हमसे बना। And now in most of the agriculture universities and institutes we have a division of floriculture. But still what I would say is जो ये crop है अभी की जो crop है जो आप देख रहे हैं तो you have studied floriculture इधर-उधर से पढ़ के आए हैं आप और आप पढ़ते रहते हैं और पढ़ाते रहते हैं। जब हम लोग के टाइम में there was nobody to guide us on anything because उस टाइम में फ्लोरिकल्चर कहीं पढ़ाई नहीं जाती थी, वो पढ़ाई जाती थी तो 1-2 क्रेडिट का कोई कोर्स होता था तो उससे फुल फ्लेज्ड प्रोग्राम्स नहीं थे तो टेक्निकल बैकस्टॉपिंग नहीं मिल पाई। और अभी भी हमारे देश में जो फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स ग्रो करते हैं प्रोड्यूस करते हैं उनको टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिल पाती है, दे आर ऑन देयर ओन मोस्ट ऑफ द टाइम। देयर इज लॉट ऑफ स्कोप not to start a floriculture venture by growing something. You can even start just giving the technology to people and that will be very big contribution to floriculture development. Inadequate skilled manpower. जब हमारे देश से एक्सपोर्ट होने शुरू हुए थे तो तब once a German expert was there, consultant was there and he was visiting a unit in Pune. It was a major export unit. And I was standing with him and then he asked me a question. That set me thinking because हम लोग भी बात करते थे गवर्नमेंट की तरफ से तो हम बोलते थे कि हमारे यहाँ पे cheap labor है, plenty of labor, cheap labor and
lot of sunshine, which is lacking in the European countries. These are our plus points. But that day I realized that the gentleman pointed out, why is the neighbor moving in slow motion? I realized that there was a lady carrying a bucket of roses on her head, and she was walking slowly to the pack house area for keeping it the pre-cooling. I realized that why are they doing it? Because they were on a daily basis. कि 100 रुपये मिलने हैं दिन के मेरे को, तो दिन में मैं चाहे 5 घंटे काम करूं चाहे 12 घंटे काम करूं, मुझे मिलने उतने ही 100 रुपये. So they started to take it a little lightly. So what I realized was we have plenty of labor, cheap labor, but inefficient labor. अब वो skilling जो होती है, I was fortunate that I was in the governing council of the Agriculture Skill Council of India. तो वहाँ पे I was trying to push floriculture. तो उसमें अभी जो उन्होंने टेकअप किया, अनफॉर्चुनेटली सब तो नहीं मैं कुछ कर पाया, देर 3-4 years. तो उसमें उन्होंने जैसे क्या फ्लोरिस्ट ट्रेड, तो उन्होंने कहा फ्लोरिस्ट जो हैं उनको इम्प्रूव करें, उनका जो वैल्यूएशन करें, उनको पता कि बुके अच्छा बनाएं. But it was more keen that people who work at the farms, they must know how to grow flowers and things like that. हमारे देश में ये है कि माली कौन है, जिसको पानी देना आता है गमलों में, जिसको थोड़ा गुड़ाई करना आता है, जो इंटरकल्चर करते हैं, तो माली बन जाता है, अपना तो माली बन जाता है. That way तो we are all glorified माली, we are nothing else. लेकिन हमारा ये है कि भाई अब वो सब चीजें रिसर्च इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटीज नहीं सिखाएगी आपको. I was very happy that when I discussed with the director of horticulture at DMC, he was a very pragmatic person from Tamil Nadu, in Delhi, in NDMC, which has got a large area, VIP areas under their control. तो उससे क्यों मैं मिला वो वही बताता हूँ आपको. लेकिन उसको मैंने बोला तो उसने कहा कि सर we are starting a gardening course for our Malis. तो हमने कहा कि उसमें क्या करोगे? कहता है कि it will be a refresher course for our Malis. कहता मेरे मालियों को भी कुछ पता नहीं है, कहता वो ग्रो करते हैं लेकिन कुछ नहीं करते, उससे हमारा लॉसेस बहुत होते हैं. अब वो लोगों को सिखाना, तो स्किल मैन पावर डेवलप करना. स्मॉल फार्म्स it is a major constraint, there is no doubt about it. Not only for floriculture but for any crop for that matter, we have very small farms. जो अल्लाह साहब ने बात की कि उनके भी जो फ्लावर प्रोड्यूसर्स हैं वो बहुत स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं. जो अभी बात चल रही थी कि वो हमारे यहाँ पे भी 1 कनाल 2 कनाल 4 कनाल का एरिया है, तो उसमें क्या क्या कर पाएंगे वो कर. Poor quality planting material is another concern, that unless the planting material is of a good quality, what it will produce cannot be of a better quality. So that is we have to keep in mind. हम लोग सोचते हैं कि भाई और होता क्या है कि सरकार में जो हम लोगों का गवर्नमेंट का सिस्टम है ना, I would advise anybody who wants to take up commercial floriculture, don't go by the government systems which we have been following for years. जो होता है ना lowest quotation. अगर आपने बल्ब मंगाने हैं किसी के अच्छे ट्यूलिप हाउस में, get it from the best source. Even if it is costing you 10 rupees higher, 10% higher cost, doesn't matter because that will give you a better quality. हम लोग करते हैं कि भाई थोड़ा सा कम कर लें, उसमें कॉस्ट कर लें, तो प्रोडक्शन हमारी कम हो जाएगी. बट नो, when we invest poorly on our planting material, then we get very poor quality product to market. This one is product market trends in India. It says that if you see cut flowers in 2029 also will be selling as more than the plants or the cut foliage or propagation material, because flowers में रेंज बहुत है और अभी हम लोगों की जो appreciation है that it goes for flowers. Next one. These are the loose flowers, loose prospects. Now this is just a market in Kolkata, what they call as Malik Ghat. वो मैं बताऊँगा. इसमें लिखा हुआ है 12 lakh temples और मुझे ना समझता. अब देखिए 12 lakh temples हैं, हर एक टेम्पल में तो हम फूल चढ़ाते हैं. That is our way of bribing the God कि भी मेरे को पास कर दो इम्तिहान में, या मेरे को ये दिला दो, उधरा दो. हम जाके फूल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं. तो 12 lakh temples में तो फूल तो लगेगा ना, तो वो लूज फ्लावर से यूज होते हैं, तो हमको उतने फूल चाहिए.
and we have millions of netas. और हमारे जितने भी नेता हैं, आप देखिए कितनी पॉलिटिकल पार्टियां बन गई हैं, कितने सारे नेता हैं। हर एक नेता को अपने गले में दिन में 4-5 मालाएं तो चाहिए अलग अलग। तो वो मालाएं कहाँ से आएंगी? इन्हीं से बनती हैं ये। तो वो अब जैसे एक बार ये कलकत्ता से आदमी मंगाता था दिल्ली मार्केट में, मैंने उससे पूछा कि भाई इस वक्त रेट क्यों इतना ज़्यादा है। मेरे अपने डॉटर की वेडिंग थी तो मैंने सोचा कि वो सस्ता देगा मेरे को। उन्होंने में वो ये जो एक घड़ी होती है ना 20 स्ट्रिंग्स की, एक वो बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, 20 स्ट्रिंग्स की एक वो बोलते हैं, कोटी बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। तो मैंने बोला कि एक कोटी कितने का? तो उसने मैं पहले वो जब मैंने उससे पहले बात की थी तो 30 रुपये कोटी था। जब हमारी डॉक्टर की वेडिंग हुई तो उस टाइम में सीजन ऐसा था तो उसने कहा 150 रुपये। कहता सर आपको दे रहा हूँ, मेरी लागत है इतनी। मैंने कहा इतना क्यों बढ़ गया? कहता एक तो सप्लाई कम है और अभी नेक्स्ट मंथ में इलेक्शन आ रहे हैं तो अब वो बहुत ज़्यादा खपत हो रही है। So that is the kind of thing. And then there is circular economy. I'll talk about the circular economy a little later. Next one. Cut flowers की हम बात करें अगर if we see, earlier we had rose, carnation, chrysanthemum, cactus, tuberose, orchid, lilia, and there are a few more. But now advanced product diversification is there. Heliconia, hydrangeas, antirrhinum, limonium, ranunculus, Lysianthus, god of paradise, Ursomeria, कई चीजें हैं जो भी मिल रही हैं जो पहले नहीं मिला करती थी। Now I like to mention about 2 of the products. Hydrangea, I have personally seen in Himachal. I have studied in Himachal. तो हिमाचल में हिली एरियाज में होते थे, जो बड़े बड़े लोग होते थे उनके गार्डन्स में होते थे हाइड्रेंजिया, इतना बड़ा बड़ा फूल होता है। एंड मैं एक बार वहाँ से उनके वहाँ से गार्डन के बाहर से मैंने चोरी की, वो काट के ले गया। मैंने कहा कि I'll keep it in my house, but they did not last for long. But now there are varieties which are being developed, which do not have a very hard woody stem. So that is a very big thing. So that they can drink water and they can remain fresh for a longer time. Another thing is there is a unit in Bangalore which is now growing hydrangeas in several hectares. Now, see, these can be grown in the plains also. This is the kind of range improvement which has happened. Another example which I wanted to talk about was heliconia. I bought a bouquet for somebody very senior. There was a very senior person, an industrialist. तो उनको मेरे को भेजना था एक बुके, तो I went to a big florist. मैंने कहा कि मेरे को सबसे बढ़िया बना दो विलियम का। उसने कहा विलियम सबसे महंगा है इंडिया का, 250 रुपये each stem. So मैंने कहा give me 10 stems of विलियम। मैंने कहा 2500 के बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैंने देखा, then I saw a variety, particular variety of विलियम, this heliconia in his place. मैंने कहा इसमें heliconia डाल सकते हैं? कहता है डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। heliconia के stem was this long. मैंने कहा इतना बड़ा बुके किसी के पास जाएगा तो उसको अच्छा लगेगा लेने में। तो मैंने कहा ये कितने का दोगे? तो मैंने बोला था उसको 4 डालना। फिर मैंने उसको बोला 2 ही डालो भाई, बिकॉज ही सेड कि आपको मैं 250 रुपये में लगा लूँगा। तो बिकॉज ही न्यू मी द फ्लोरिस्ट, ही सेड मैं आपको 250 रुपये एक स्टेम का लगा लूँगा। तो दैट मीन्स ही वाज मार्केटिंग फॉर हायर प्राइस। एंड देन आई मेट डॉक्टर प्रसाद। तो डॉक्टर प्रसाद ने बोला, मैंने उसको बोला आई हैव मेट हिम इन कोचिंग एंड देयर somebody had displayed it. मैंने कहा this is very nice and it is selling for 250 rupees. कहता है आपने दिल्ली में कैसे खरीद लिया 250 में? They had to buy some heliconias for the G20 meeting जो सितंबर बिगनिंग हुई थी। मेरे से खरीदने से 1 हफ्ता पहले उन्होंने कहा कि we paid 1000 rupees per stem. Now can you imagine कि हेलिकोनिया की 1 stem was costing 1000 rupees. अब वो है कि उसको खरीदने वाले सरकार खरीद सकती है, सरकार के पास पैसा है। यहाँ some there will be a few buyers, but at the same time it tells us that the value of flowers has gone up from 1 rupees to even 1000 rupees per flower. So there are other flowers also. Antirrhinum we have always taken it as a seasonal flower and annual flower जो हम लोग वैसे grow करते हैं, gardens में grow करते हैं. I have never seen that it is a commercially grown. I visited a farm when I was in Bangalore last month. I visited a farm which is a 40-hectare farm in that particular location in Bangalore.
and he's growing various products, probably the largest farm in India. तो उसके मैंने पूछा तो उसने कहा कि he was showing me the products. One of the products I saw was anti-venomous. Anti-venomous for this. So I was very impressed. मैंने कहा as a catchflower I'm seeing for the first time. He said, sir, I was in Colombia last month, and Colombia the anti-venoms were taller than me. And that gentleman I was talking to is taller than me. So obviously up to 6 feet, 2 meters long stems of anti-venoms were being sold. Licenses की मैंने बात की तो वो कि 9 रुपए का एक सीड आता है, 10 रुपए का एक सीड आता है. So you can imagine कि उसकी वैल्यू कितनी होगी if you are able to produce in bulk and sell it to the market. Domestic versus export markets. I have always believed that everybody need not export. हमारा देश में market, domestic market इतना ज़्यादा बड़ा है कि we have not even touched 10% of that as of now. जरूरी नहीं है कि because export की requirements बहुत strict होती हैं और export की production quality पहुंचने के लिए हमारे को time लगेगा. So first you should always, if you grow any of the products, you should target the domestic market. But if you have somebody who has the technology, who has the money to invest, and then go for maybe try for export with items which are not too much capital intensive or too much technology intensive. Single versus bouquets, हम बात करते हैं कि हमारे के यहाँ बुके बिकते हैं, लेकिन I once went to buy because my younger brother's wedding anniversary was on 12th of February. So मैं बात कर रहा हूँ आज से कोई 20 साल पुरानी. I went to buy a rose बुके पर, तो उसने कहा कि एक रोज ब्लूम जो है वो 25 रुपए का है. कितने बनाऊँ, कितने का बुके बनाऊँ? मैंने कहा 25 रुपए का एक रोज. कहता थी परसों वैलेंटाइन डे है. सो वो उस दिन तो सिर्फ वो एक सिंगल रोजेस को पैक करके देते हैं, रेड कलर के रोजेस को. तो अब उससे देखो उसकी डिमांड बढ़ रही है हमारे देश में. वी हैव सेवरल डेज वेयर वी सेलिब्रेट, whether we are celebrating your girlfriend or a partner, whether you are celebrating your mother on a Namaste, or various other occasions which are there where we have to give flowers. Sometimes we give only a single flower. And I have always believed one thing. आप इतना बड़ा बुके दीजिए मुझे, यहाँ एक flower दीजिए. You have conveyed the sentiments even with one flower, because it is a vehicle for conveying your emotions or sentiments. It's not necessary that you have to make a bouquet of 2 dozen flowers. Buying for others. This is what I had mentioned earlier. हम लोग अभी भी औरों के लिए खरीद रहे हैं, अपने लिए नहीं खरीद रहे हैं. जब हम लोग अपने लिए इन्वेस्ट करेंगे, when we buy a flower and bouquet for and take it home for our decoration in our home, I will be interested in कि मेरे को 10 दिन तक और दोबारा मार्केट में जाना पड़े. उसके लिए मैं वही चीज खरीदूंगा जो 10 दिन तक फ्रेश रहेगी. अब चाहे उसके लिए मुझे ज़्यादा पैसे देने पड़े. अभी मेरे को किसी ने बोला कि भाई every third day I have to change my roses. So what should I do? मैंने कहा start keeping chrysanthemums. It will last you for more than a week, 10 days. तो उसने कहा chrysanthemum roses के same price क्या है? मैंने कहा exactly. That is the thing. मैंने कहा start keeping orchids in your house. Orchids will be still higher. Orchids में I just wanted to give you one example. ये जो single versus bouquets का था, उसमें ऐसा था कि once I was visiting Sikkim, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे बहुत सारे Cymbidium orchids दिखाए. आपके यहाँ भी हो सकते हैं. The climate is such that you can also grow Cymbidium orchids. That's why I am mentioning it. And then when I was traveling abroad somewhere in Europe, Germany में कहीं पे, तब वहाँ पे मैंने देखा एक स्टेम में कम से कम 8 फ्लावर्स आते हैं, 6 से 10 फ्लावर तक आते हैं, मतलब 7-8 फ्लावर होते हैं. Each flower was in a small box and it was being sold for a couple of euros. So I was surprised. Instead of selling a stem, couple of euros was the price for a single stem, single orchid which was being put in a small box and being sold. Now उस तरह से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, किस तरह से हम उसको मार्केट करते हैं.
Next one, please. Now, this is speaking flower. This is a new thing which has come up. It has started in Bombay, it has started in Bangalore, it has started in Hyderabad and some other places. Now, अब एक flower के ऊपर, these are fresh flowers. जो दोनों तरफ में आपको red rose नजर आ रहा है, these are fresh flowers. उसके ऊपर एक तरफ लिखा हुआ है Happy Valentine's Day, एक तरफ लिखा हुआ है I love you. अगर मैंने आपको देना है, तो अगर उसको मैं लिख दूँ उस पे कि I love you, Dr. Nansky, तो you will feel very pleased that it has been personalized for me. This flower has been presented to me and it has got my name in it. This kind of a personalization also has a cost. It has started in India now. That's why I wanted to just show this flower. It has not become very common and it's not really a necessary thing to do, but then this is a added dimension to marketing. Next one. Now, नहीं, वो एक मशीन आती है, उससे प्रिंट करते हैं, गोल्डन प्रिंटिंग करते हैं या सिल्वर प्रिंटिंग करते हैं, या जो भी कर रहा है, जैसे रेड पे तो गोल्डन अच्छा लग रहा है, कि व्हाइट पे भी गोल्डन अच्छा नहीं लगेगा, सिल्वर अच्छा नहीं लगेगा, व्हाइट पे रेड कलर से प्रिंट करेंगे, उस तरह से होता है, वो मशीन से प्रिंट करते हैं. Now this is the slide which I had used for a lecture during COVID time. Do we grow the flowers for our temples or do we grow as an animal feed? जो next slide वाली photograph है, cows are eating. They don't normally eat flowers, but COVID के time में उनको जो भी मिला था वो खा रहे थे और हम लोग flowers फेंक रहे थे because there was no market for this. Next one, please. This is the Catfolian. This is a range. इसमें आप देखेंगे those who can recognize the plants, they will know that this, most of them are dracaenas. Now, that is the kind of thing, this is the variability which is available to us, and this is an Indian farm produce. देखिए आप कितना produce, कितने तरीके का है, किस तरह के बंडल बने हुए हैं. Next one. इसमें देखिए, इसमें what I wanted to show you was the middle one particularly. Left side पे तो जो funds वगैरह हैं बहुत हैं, palm के जो leaves होते हैं, popular है. जो middle में है, that is the eucalyptus. And when I was introduced to this plant, stem में दी थी, तो मैंने कहा था कि this is known as dollar plant. वो इसलिए कि each stem of this eucalyptus, this round leaves वाला, it was selling for $1 in export market. That somebody was exporting from UK. तो उसने तो मुझे बताया, तो I was initially not believing it. But then when I traveled abroad, I asked for the price, and it was very, very expensive, those things. और अब कल फोलियस के बारे में मैं एक चीज कहना चाहूँगा. हम लोग जब मार्केट जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, तो हम लोग सब्जी वाले से क्या मांगते हैं? धनिया दे दे, मिर्ची डाल दे. तो धनिया is very, a lot of coriander is produced in our country only for this purpose. But then the thing is, वो होता क्या है कि हम लोग समझते हैं कि धनिया मुफ्त में ले आए, लेकिन उसके चक्कर में धनिया मुफ्त के चक्कर में $2 का धनिया या $5 का धनिया लेने के चक्कर में हमने वो $10 वाला टमाटर हमने $15 में ले लिया. वो but then that is just the mindset that anything free which we value more. वैसे ही जब फ्लोरिकल्चर में जब हम आते हैं, जब कटफ्लावर के बुके बनाते हैं, so this catfolias is used as a fillers. वो हम उसको फ्री लगाते हैं, उसके पैसा नहीं लेते ये लोग. But then I was talking to a florist. उसने कहा जी मैंने तो उसमें इन्वेस्ट किया है ना, तो मैं आपको फ्री क्यों दूंगा? तो जो $10 वाला मेरा रोज है, मैं उसको आपको $15 में देता हूँ, तो उसकी कॉस्ट तो जो फिलर की कॉस्ट उसमें इंक्लूड होगी. And this I realized very much because there is one of the flowers I have not mentioned it because वो अभी भी as a filler यूज होता है हमारे यहाँ पे, वो है जिप्सोफिला. जिप्सोफिला हमारे देश में वो धनिया के कैटेगरी में आता है कि वो हर एक बुके में लगा देते हैं, सफेद सफेद छोटे छोटे फ्लावर होते हैं, बहुत अच्छा लगता है. That enhances the value of the bouquet. But then in one of the exhibitions in Holland in one of the years, the focus was on Gypsophila. So I was wondering as to कि focus हम लोग इतना क्या करेंगे? I realized that there were about 7-8 companies which were breeding Gypsophilas. They have exhibited their new varieties. बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सितार के स्टोर किया था. They were looking very
तो उसने कहा कि आई एम सॉरी यू आर नॉट अ लेडी। I said, I'm not sorry that I'm not a lady. So he said, no, I was saying it because वो लेडीज को ना वो हेयर ड्यू के लिए वो फ्री वो डेमोन्स्ट्रेशन था उनका कि वो फ्री लगा के देंगे, आपको बताएंगे कि कितने तरीके से आप यूजिंग जिप्सोफिला यू कैन डेकोरेट योर हेयर। नाउ हर एक चीज की एक वैल्यू होती है, एक वो कौन उसको किस तरह से परसीव कर पाता है, कौन नहीं कर पाता है, वो फर्क होता है। नेक्स्ट वन। These are house plants. There are various kinds of thousands of house plants. I used to love house plants, and I have given several lectures on house plants. Now I am in the process of writing a book enjoying house plants. Because house plants you enjoy because of their decoration value and they look nice. They decorate the place very well. There is a plant for each space. कहीं पे हमको लंबा प्लांट चाहिए, कहीं पे स्प्रेडिंग प्लांट चाहिए, कहीं पे हैंगिंग बास्केट में चाहिए, कहीं पे चाहिए। The right hand side picture, it has got about 5 plants which are there, which I have written O2 plants. These are oxygen plants. NASA, I think in 1996, they had come out with a report where they said that there are certain plants which improve the environment, they improve the air which we are breathing. So we have to breathe oxygen most of the time. So बंद भवन में हम लोग काम करते हैं, जहाँ एयर कंडीशन करते हैं, जहाँ बंद करते हैं, कहीं से हवा नहीं आती। So people keep these plants, whether it is Sensilia or Rhodophyton or Evelopment or Rega palm or whatever. These are the plants which are there. They are known to improve the environment of the place with the air and breathing very improve. Next one. Now this is what I was telling that हम लोग क्या लैंडस्केपिंग होती है, अब आप लोगों को यहाँ पे अगर लैंडस्केपिंग करनी है तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, तो हम किसी भी नर्सरी में जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि भाई हमको 10 पौधे चाहिए पाम के, अरेका पाम के, तो कोई इतना बड़ा है, कोई इतना ऊंचा है, इतना बड़ा, but that is not what we require. It is a uniform thing. तो सारे 10 बड़े हैं तो सब 10 छोटे होने चाहिए, so that tomorrow they will become bigger. And all of them will be growing at the same time, so they will attain the same height. Because अगर एक प्लांट बड़ा लगाया, एक प्लांट छोटा लगाया, तो उसकी वो डेकोरेशन वैल्यू कम हो जाती है. So that's why this one is bigger the better. इसमें ये है कि now we have technology where the used plants can be shifted. Now हम देखते हैं कि नया होटल कोई खुलता है, नया कोई ऑफिस कॉम्प्लेक्स खुलता है, नया रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स खुलता है, तो उसके पास देखेंगे तो लैंडस्केपिंग पूरी हो रखी है, बड़े-बड़े प्लांट्स लगे हैं, वो वैसे ही पॉसिबल हो पा रहा है। दिस राइड इज ऑफ कोर्स फ्रॉम आउटसाइड, बट हमारे देश में भी अगर बहुत हो रहा है ये कि बड़े-बड़े प्लांट बेचते हैं। I had gone to भुवनेश्वर few months back, वहाँ पे इंडियन रोज कन्वेंशन होने वाला है जनवरी में, तो उसके लिए हम साइट सिलेक्शन करने के लिए गए थे, अप्रूव करने के लिए गए थे भुवनेश्वर का। तो वहाँ पे जहाँ पे गए तो वहाँ के जो गार्डन्स वगैरह के हॉर्टिकल्चर के जो चीफ थे, he was taking me around and he showed me one place. उसने कहा कि ये पौधा आपको कैसा लगा? I had taken a picture but it's not with me right now, or I would have shown you. उसमें 2-3 plants थे. They had got it from Kadian. Kadian is a place where there is a पता नहीं कितने 100 hectares nurseries हैं, nurseries हैं, and they have plants which are costing 10 rupees to several lakhs rupees. तो जब पहले मैंने एक बार अखबार में पढ़ा था कि 5 लाख का प्लांट है, तो मैंने कहा कौन खरीदेगा यार 5 लाख का प्लांट? But when I went to Bhubaneswar, they showed me 2 plants, 2 sites which they showed me. एक जगह एक इतना बड़ा प्लांट लगा हुआ था, beautifully grown, and वो उसका ट्रेनिंग ऐसे हिसाब से किया था कि बहुत सुंदर लग रहा था। तो मैंने पूछा कि ये कितने का मिला आपको? कहते कड़ियम से आया। मैंने कहा कितने का मिला? कहता कि 9 लाख। तो उन्होंने कहा कि हमारे साहब ने कहीं फोटो देखा था तो उन्होंने को अप्रूव कर दिया और बोला कि आगे क्या है। दूसरी जगह there were 3 smaller plants इस साइड के होंगे और वो भी एक सीरीज लगा रखे थे और वो बहुत ही बढ़िया लग रहे थे। तो मैंने पूछा कि इसकी कॉस्ट कितनी है, तो उन्होंने कहा कि ये टोटल कॉस्ट इसकी 4.5 लाख रुपया है, 1.5 लाख रुपया एक प्लांट का। अब आप
बैंगलोर एयरपोर्ट हम जो आएंगे क्या हमने 4 प्लांट खरीदे हैं 1.3 करोड़ से ब्राजील से तीसरा है तीसरा है ये वो Yes. बैंगलोर एयरपोर्ट का देखिए बैंगलोर एयरपोर्ट का आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर लकी यू आर truly lucky that you get to discuss with him in a couple of days time. संडे I think बहुत एफर्ट्स तो आ रहे हैं वो बैंगलोर से and he is a landscape person. But जो उन्होंने डेवलप किया है this is just idea. Now that is a whether it is a garden inside an airport or it's an airport inside a garden, it is difficult to tell. And उसमें उन्होंने बायोडाइवर्सिटी जो रखी है ना जो आपने कहा भी जो उन्होंने सर ने बताया कि भाई वो ब्राजील से लेके आए हैं 30 लाख का एक प्लांट रोज अब देखो वही चीज होती है बड़े बड़े प्लांट्स वहाँ से अब देखिए ब्राजील कितनी दूर है वहाँ से इस शेप में आ गया that is being kept inside an airport closed environment तो उसके लिए कितना उनको सोचना पड़ा होगा कि यहाँ पे कौन सा प्लांट सुटेबल रहेगा वो कैसे चल पाएगा उसकी मेंटेनेंस कैसे करेंगे हम सब लोग वो सब चीजें वो सोच के तभी बंदा इन्वेस्ट करता है तो हम लोग सोचते हैं कि भाई फूल लगा लिया पौधे लगा लिए इट्स नॉट दैट इजी आई एम सॉरी और मुझे मैं पहले कह रहा था कि यू हैव टू डेवलप अ पैशन फॉर व्हाटएवर यू डू यू टेक इंटरेस्ट ये अगर एक कोई प्लांट है सपोज इट इज अ ड्रेसिना समथिंग आपको पता है ड्रेसिना है तो नाउ डेज इट इज वेरी इजी यू गूगल सर्च व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोइंग ड्रेसिना उससे आपको पता लगेगा कि उसको कैसे उसको बेटर करना है उसकी क्वालिटी कैसे इंप्रूव करनी मिलेगी जो फैसिलिटी हमारे टाइम में नहीं थी पहले टाइम में नहीं थी जो अब है यू आर लकी दैट एंड दैट वे देन यू कैन चूज कि भाई इसमें मेंटेनेंस कम है इसमें वैल्यू ज़्यादा है तो मैं उस प्रोडक्ट को चूज करूँगा नेक्स्ट वन प्लीज Now this is air cooling pots. Now the pots are being designed that उसमें हमको कुछ करने होता है क्योंकि ये कई बार ऐसे बड़े-बड़े plants ना नर्सरीज में over a period of time पड़े जाते हैं बिकते नहीं वो 1 महीना नहीं बिका 2 महीने नहीं बिका तो उसमें क्या होता है कि जो जनरली आपने देखा होगा कि जब पौधा बहुत दिन तक हो जाए ना तो आप गमले को उठाए ना पौधे को उठाए ना तो जड़ें नीचे से निकल के नीचे के गमले के नीचे होल से निकल के जमीन में चल जाती है तो उससे बड़ा नुकसान होता है पौधे का बिकॉज उसको जैसे निकालेंगे ना उसके बाद वो चलता नहीं जाता नाउ दीज आर एयर कूलिंग पॉट्स पॉट्स में सिस्टम ऐसा है कि इसके हवा से ना साइड से हवा जाती रहती है तो उससे वो रूट की प्रूनिंग होती रहती है जस्ट एनफ फॉर मेंटेनिंग द प्लांट नेक्स्ट वन दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ इंटीरियर स्केपिंग इसमें पिक्चर में मैंने सिर्फ इसलिए दिखाई दी है दिस इज व्हाट इज हैपनिंग कॉमनली in our country whenever we use flowers for interior scaping. अभी आप देखेंगे यूनिवर्सिटी में भी वाइस वो जो कन्वोकेशन होता है तो सामने बड़ा सजाते हैं कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें हम लोग सजाते हैं शादियों में हम लोग इतना डेकोरेट करते हैं सब कुछ करते हैं इसमें जो सबसे बड़ी what is the negative point can somebody say? In my opinion the most important negative point here is too many flowers. इतने फ्लावर्स की कोई जरूरत नहीं थी जो इसमें पर्पस दिखाया गया है कि भाई इंडिया में हर एक जगह से फ्लोरिकल्चर आता है that could have been shown by a little narrower streams of flowers and less flower could have been used and it would have looked much better in my opinion much better than what this is what is happening in अभी हम लोग के यहाँ पे जब शादियाँ होती हैं तो I have gone through marrying my daughter so I realized this और हमारे फ्रेंड्स की भी डॉक्टर की वो शादी में तो हमको कहते हैं कि भाई वो फूलों को तो आप देख लोगे एज इफ कि आई एम ग्रोइंग फ्लावर्स कैसे तो आई एम ऑल फ्लावर बट देन वन थिंग इज आई रियलाइज मार्केट में जाओ किसी से पूछने के लिए तो वो पूछता है कि 2 लाख का है 15 लाख का यू वांट टू स्पेंड 15 lakhs or 25 lakhs or 2 lakhs on your flowers which is becoming expensive and वो अगर आप 25 लाख खर्च कर रहे हो तो उसके हिसाब से वो फ्लावर चूज करेंगे बट ज़्यादातर वो लोग क्या करते हैं वो जहाँ पे 10 फ्लावर्स लगाना है वहाँ पे 12 लगाए वी ऑल्सो फील कि वो उसने 12 लगाए ज़्यादा फ्लावर्स लगाए हम समझते हैं कि ज़्यादा चीज़ लगने से ज़्यादा सुंदर लगती है ऐसा नहीं है फ्लावर्स के हिसाब से ईच फ्लावर हैज इट्स ओन ब्यूटी एंड इट हैज गॉट ए स्पेस टू कवर इससे मुझे एक चीज़ याद आई which I wanted to share
अभी जो शादी वगैरह में डेकोरेशन करते हैं, दैट इज अ बिग स्टार्टअप दीस डेज, देयर आर लॉट ऑफ पीपल टेकिंग इट अप। उसमें क्या है कि पीपल अर्लियर, मैंने एक शादी अटेंड की थी कलकत्ता में एक मारवाड़ी के यहाँ, तो उन्होंने कहा कि हमने तो ऑर्किड मंगाया है थाईलैंड से, तो उन्होंने 2 लाख रुपया खर्च किया था फूलों को, जो आज की तारीख में 20 लाख से कम का करता नहीं है। तो उस टाइम मैंने उनको बोला कि ठीक है, अब उनको ये था कि नहीं 2 दिन की शादी है, तो उसके बाद वो सूख भी जाए तो फौरन पता टाइम नहीं है। Then I have been talking to these decorators, और उन्होंने कहा कि we prefer to use a flower like जरबरा for instance। क्यों? जरबरा में कलर्स बहुत ज़्यादा हैं और उसका कवरेज इतना बड़ा फूल होता है ना, तो इतनी जगह घेर लेता है। तो हमने जहाँ पे रोजेस के हमको 20 लगाने हैं, वहाँ पर हम जरबरा 5 लगा देंगे, 7 लगा देंगे, उससे वो जगह कवर हो जाएगी। Now these are various nuances which you have to keep in mind when you take up anything. Next one please. Dry flowers, as I was telling you, that is our biggest export. Total trade is about 500 million. India exports is अभी 250 करोड़ का करते हैं लोग. India is the 5th largest exporter, but mind it, our share in the global market is only 7%. So you can imagine as to what is the scope for us to move forward. And what we are doing is we are sending out 500 varieties to 30 different countries. And as I have mentioned here, botanicals are collected from the wild. They are made into potpourris, they are made into wreath, which is there in the picture. They are made into various bouquets and things like that. And each thing is very expensive. अभी हमारे देश में इसका मार्केट बना नहीं है। अभी क्या मैं तो कहता हूँ कि once I was talking to Ramesh Flowers, which is the largest in the country in terms of export. तो उनके साथी साहब ने बोला कि आप कभी चेन्नई जाइए तो मैंने कहा आप डोमेस्टिक क्यों नहीं बेचते? तो उन्होंने कहा कि आप चेन्नई जाइएगा तो हमारा नया स्टोर खुला, आप विजिट कीजिए। So the next time I was visiting Chennai, I visited their store. I was talking to the manager there and he said that there are very few sales because जब लोग आते हैं तो वो सोचते हैं, कहते हैं कि सूखे प्लांट के हमको, सूखे फ्लावर के हमको 50 रुपये देने नहीं चाहिए। That is our perception. And then they forget that dry flowers are also known as everlasting flowers. आपने खरीद दिया ये बाइक तो 6 दिन तक आपको कुछ उसकी डेकोरेशन वैल्यू कम नहीं होती, उसको यूज करते हैं। Next one. This is the trust management. Now reduces the temperature, देखिए जहाँ पे भी लॉन्ग होता है उसके आसपास में कंक्रीट होता है। कंक्रीट में आप दिल्ली में जाइए, प्लेस लाइक दिल्ली, if you walk barefoot in Delhi on the concrete, the temperature of the concrete is about 45 degrees Celsius. You walk on the grass, it is much less, about 10 degrees less in that area in the long area. Then it reduces the dependence on the topsoil because इसमें क्या होता है, हम लोग जो भी फ्लावर ग्रो करते हैं, all the agriculture students should know what is the value of topsoil. But whereas when we are growing grass, उसमें topsoil के अंदर जरूरत नहीं होती, ऊपर को हम कंपोस्ट लेते हैं. We make into rows like this. We just go and spread them rows and then we have a long ready. Because अभी जैसा हो जाता है कि भाई हमको नर्सरी साहब के नाम से हमने एक स्टेडियम बनाना है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम इतने साल वेट करें, तो नर्सरी साहब रिटायर हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से चल जाते हैं, उनको बता देते हैं, उनको मैनेजमेंट करते हैं, तो 2 महीने के अंदर हमारा पूरा नाम तैयार हो जाता है। And this is easy to transport and but one thing I have still not been able to get the figures. What is the trade in this particular thing? But I can tell you only one thing. I was visiting one of the nurseries in Kolkata, in a remote area which is known as Rajarhat. It is on the outskirts of Kolkata. तो वहाँ पे नर्सरी में गया था किसी और चक्कर में, तो उसमें बोले वो बिजी था तो अभी आया नहीं, तो मैं उसको पूछा था कहाँ बिजी हो गए थे आप, तो उसने कहा मेरे ट्रक जाने थे आज दो। तो मैंने पूछा किस चीज़ के ट्रक भेजे हैं, कहाँ भेजे हैं? उसने कहा यहीं पर सिटी में भेजे हैं जी, घास के भेजे हैं। तो उसने भी ऐसे ही ट्रक का
थे उसने 2 ट्रक भेजे थे उस दिन, तो उसने कहा, मैंने कहा यहाँ से कितना, उसने ही टोल में कि राजारहाट एरिया से साल में कम से कम 20,000 ट्रक जाते हैं, 20,000 ट्रक्स में गार्डन्स में मारे जाते होंगे, और उसकी कितनी वैल्यू होगी, वी डोंट नो। हाँ, देखिए वो तो अल्लाह के सामने बता दिया है अपने प्रोडक्ट में, उन्होंने घास से बोला नहीं था कि इतने सारे घास है ना, आई यूज्ड टू गो टू बांग्लादेश फॉर माय वहाँ पे मैं देखता था घास जो थी वो शेड में भी होती, सो आई वाज लुकिंग फॉर द सीड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर घास। उसने कहा यहाँ तो हम तो यहाँ से निकाल कर लगा देते हैं, तो क्योंकि हमारे इंडिया में आपने देखा होगा कि बड़े-बड़े गार्डन्स में ना शेड में कोई घास चलती चल नहीं पाती है, वो दरअसल जो ब्रॉड लीफ घास वो चलती है, तो वो मैं सिक्योरिटी को वहाँ से मिला, पर उसका हमने कहा कि सीड इसका मिलता है, और वो तो वहाँ से पता है कि इसका सीड मिल जाता है। नेक्स्ट वन वर्टिकल गार्डन। हाँ देखिए, आपके वर्टिकल गार्डन की मैं बात कर रहा था, तो जो हम लोग पिलर्स को रखने ग्रो करते हैं, we also call them green walls पे हमने पूरा डेकोरेट कर दिया। Now this slide I had used first time in our lecture in 2009. सोलन में एक मीटिंग हुई थी, तो उसमें मैंने यूज किया था। This is the picture from Italy. They call it a vertical forest. अब आप देखिए 108 meters high है, 23 floors, और हर एक फ्लोर पे नीचे लिखा हुआ है 990 shrubs and trees on each floor. Now this I have shown, हमारे देश में नहीं होता है और उसकी जरूरत भी नहीं, but at the same time, now in some of the residential areas, the residential buildings which are being built, I was told I had gone to Pune visiting my daughter there, and then उन्होंने मुझे बताया कि एक नया बिल्डिंग बन रहा है, वहाँ जाके देखिएगा। वहाँ में गया, उन्होंने बालकनी में रखे हुए थे पौधे, shrubs ऊपर बड़े-बड़े गमलों में, इतने बड़े-बड़े गमलों में। तो मैंने उनसे पूछा, कहते कि लोग को चाहिए, कहता हम तो ट्रक में डाल के सब कुछ ले आते हैं इतना ज़्यादा, कहता आधे लोग में हमने गमले रख दिए हैं, अब उनको खरीदना नहीं पड़ेगा, कोई भी खरीदता है ना, हम सोचते हैं कि उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, बड़ा गमला कैसे ले जाएंगे, हमारी गाड़ी में तो उतनी जगह नहीं होती है, तो उन्होंने कहा कि हमने सब ले ट्रक में डाल दिए। तो उसने कहा कि भाई अगर मेरी इन्वेस्टमेंट इसमें 50,000 की है, तो मैं 1 लाख में अपनी प्राइस इंक्रीज कर दी है। तो कहते हैं कि आई एम ऑल्सो मेकिंग मनी एंड आई एम प्रोवाइडिंग देम अ बिग सर्विस, तो उस तरह से ये होता है। लेकिन ये है कि नाउ पहले हम लोगों के पास ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल हैव लेस लैंड टू कल्टिवेट फ्लावर्स, नाउ फ्लावर्स आल्सो विल हैव टू ग्रो ऑन ग्रोइंग इन द वर्टिकल गार्डन। नेक्स्ट वन, फ्लावर सीड एंड नर्सरी स्टॉक। फ्लावर सीड के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मॉर्निंग में उन्होंने सारा बता ही दिया। इसमें जो ट्रेड है यूएस $50 billion का, he also mentioned that USA and Germany are big markets. Netherlands is the largest exporter of nursery stock. Nursery stock necessarily doesn't mean seeds. अब देखिए इसमें आप पढ़ेंगे, पंजाब and Karnataka are taking the lead in terms of production of seeds, and Kashmir has a huge potential. I also believe I was proven right, वो जिसकी बात कर रहे थे अवतार सिंह की, वो एक बार यहाँ पे एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर होते थे, उन्होंने हमारे उनको बोला कि भाई मैं तो यहाँ पे क्या क्या फ्लोरिकल्चर में कर सकते हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 20 years back। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो करना चाहिए, वो नहीं हो पाया उस टाइम में। तो उस टाइम में ऑन मिशन गिल्सा काम में दलता, and they decided that flower seed production here will be good, and flower seed production को उन्होंने बताया कि भी production here was much more than what was expected. Now that is the value of the climate which you have, that you can produce so much of things here which the other places the value is not so much. Tissue culture plants, here I mentioned only about cave. Cave is a cave bio plant is a company in Pune. They supplied 60 million plants last year to more than 30 countries. They sell it all over India, tissue culture plants. They have got a 10-hectare greenhouses where they are growing tissue culture plants. They have got laboratories spread over more than 1 acre.
केमिकल जिसमें वो यूज़ करते हैं टिश्यू कल्चर प्लांट्स, वो हम लोग बड़े खुश होते हैं अपने लैब्स में दिखा के भी। हमारे पास तो वो क्या बोलते हैं उसको, जो वर्किंग यूनिट्स होती हैं, तो चैम्बर्स होते हैं, तो उसको उनके यहाँ मैं गया तो काउंटेड मोर देन 100 एंड आई स्टॉप काउंटिंग। मैंने कहा कि मैं तो सोच रहा था कि कितने होंगे इनके पास। Then he explained that I got greenhouses, this tissue culture units spread over in India 1 acre. So you can imagine कितना है। Now last वाला जो item है that is also important, इसकी बात कर रही थी, अगर हम इसी हिसाब से भी बात कर रहे थे, flower seedlings, cut trays. It's a big growing business, as I was mentioning earlier. अगर flower seed अगर 9 रुपए का है, तो उसकी seedling 25 रुपए की बिकेगी, और अगर मेरे को सिर्फ 10 seedling चाहिए तो मैं सिर्फ इतना पैकेट क्यों कर दूँ सीड का रिजल्ट तो 100 seeds और नहीं लगता है। Next one. Now essential oil. See, today in the morning, we were sitting with the registrar of the university, और उन्होंने कहा कि ये जो चाय है, ये रोजमेरी से बनेगी। Now that is the kind of thing you have potential here. You have been doing it here in Kashmir. कि आप लेवेंडर का ऑयल निकाल रहे हैं, रोजमेरी का ऑयल निकाल रहे हैं, यूरेनियम का निकाल रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं। उनको सिर्फ एक कमर्शियल एंगल देना है, ऑर्गेनाइज वे में प्रोडक्शन होना है, ऑर्गेनाइज मार्केट के लिए प्रोड्यूस करना है कि किसको कितना चाहिए, क्या चाहिए, उसको उसके हिसाब से करना है, नए प्रोडक्ट्स ट्राई करना है, सो दैट यू इम्प्रूव द प्रोडक्ट रेंज। नाउ दिस वाज द एक्सपोर्टर potential from India. You can see in $1 million में कितना है। Now there is an aroma mission which CSIR has introduced. Several other programs are there under the aroma mission, and JNK is already a part of the aroma mission. So this is not something new for you, but then you have to capitalize on your strengths. Next one. Herbal dyes and pigments. Now here इसमें देखेंगे कि herbal dyes हैं। अब जो dyes होते हैं उनके यूज आप देखिए टेक्सटाइल में होता है, इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है। होली में जो कलर्स आते हैं वो कहते हैं दे आर सेल कलर्स टू यू बिकॉज दे आर हर्बल कलर्स, तो वी पे एक्स्ट्रा बाय हर्बल कलर्स। आजकल ज़्यादातर मार्केट में आप होली में जाएंगे तो 10 में से 8 लोग हर्बल बेच रहे हैं, और उसमें से 8 में से 2 ही हैं जो ट्रू हर्बल हैं, बाकी 6 हर्बल नहीं है। लेकिन वो हर्बल नाम डाल के वो बहुत बिकता है, बट दैट इज ए वेरी बिग यूज फॉर दिस थिंग काइंड ऑफ थिंग, एंड दैट हैज टू बी in pigments. I mentioned here antioxidants. नीचे जो छुप गया है, that is the pigment which is xanthophyll which we extract from marigold. And poultry industry में उसका बहुत यूज है। बहुत टाइम से एक कंपनी है ABT Thomas company तमिलनाडु में, they have been doing it. But then now there are several companies, और एक बार ये कंपनी वाले मेरे पास आए थे दिल्ली में, उन्होंने कहा कि मेरे को Indian, so I told them to hire because they have developed 2 varieties of marigold which are very high producing. So they could not develop that MOU with them. So उन्होंने कहा कि हमारी डिमांड बहुत, we need lot of raw material, uniform size के हों, so that we can expect that उसमें से जो निकलेगा वो भी नहीं होगा। Poultry industry uses as a poultry feed, उससे जो egg का yolk होता है, that becomes better yellow color. कई चीज़ों में हमारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है फ्लोरिकल्चर की। Now, if somebody had told me even 20, 30, 40 years back, मैं हंसता उसको कि तुम पोल्ट्री इंडस्ट्री को कहाँ तुम फ्लोरिकल्चर के साथ रिलेट कर रहे हो, but then it is true. इसी तरह से कई एवेन्यूज हैं जहाँ पे हमारी जरूरत पड़ती है। और ऑयल्स वगैरह का और इससे बात कर रहे हैं तो people have developed programs, they have developed machines which are extracting the oil of jasmine or tubers in Coimbatore area or nearby Coimbatore area and Pangad area in Kerala. They have small machines with a home scale they are extracting the oil. Next one. Now this is value addition. This picture I wanted to show only for the woman empowerment angle. You see on the ladies sitting on the left and preparing something. This is a picture, of course, they are preparing something on the dwarka or something. But then they, जहाँ भी मालाएं बनती हैं, जो भी वेनी वगैरह बनती है बालों के लिए, उसमें लेडीज ही बनाती हैं।
because they can churn out more produce in a particular time में. अगर 1 घंटे में है अगर एक मर्द बैठ के बनाएगा तो अगर वो 20 मलाई बनाता है तो लेडीज उस टाइम में 25 मलाई बना लेती हैं. And ladies, unfortunately, we still pay them little less wages. उसके लिए people wait for a lady. And in one of the conferences which we organized in February, certain must be there in the conference. वहाँ पे एक थे जो कि जस्मिन वगैरह का माला वगैरह भेजते हैं बाहर. तो उन्होंने के बोले थे कि मेरे 2 चैलेंजेस हैं. विंटर मंथ्स में कोई जस्मिन की वैरायटी नहीं मिलती, एंड मेरे को जो मालाएं हैं उसमें नए डिजाइन से न्यू डिजाइन, बिकॉज दैट इज अ न्यू एरिया फॉर समबडी टू वर्क ऑन. यू डेवलप द डिजाइन एक्चुअली 4 फूल इसके लगाने हैं, 2 फूल उसके लगाने हैं, लगता है. I was very happy to see. अभी recently एक मैरिज हुई थी, उसमें वो क्या नाम है उसका, परिणीति चोपड़ा. She used lot of gypsophila in her garlands. The wedding garland was made of gypsophila. I have seen for the first time gypsophila garland as a wedding varnala. But then see the new ideas are coming up, people are making it, and anything with flowers will do good. Next one. Now this is circular economy. This is a very, very important area in which some startups, the initial startups in floriculture came in this. And जो side वाली left side वाली picture जो है, ये flowers are there after they have been offered to God. मतलब इनका ब्राइड वाला जो पीरियड था वो खत्म हो गया. अब उन्होंने नया लॉट आ गया ब्राइड का, तो उन्होंने उसको निकाल के फेंक दिया कमरे में और बाहर फेंक दिया. उसके बाद ये क्या करते हैं, these 2 young boys who are on the right hand side, they were software engineers abroad. They had come back to India. They were from UP, Kanpur area. वो एक दिन दोनों दोस्त में मिलके नदी के किनारे, गंगा के किनारे बैठ के बातें कर रहे थे. And they saw lot of flowers being going in the river. तो उन्होंने कहा कि ये तो these are polluting our rivers and उसको use क्यों नहीं कर सकते. When they left their software job, they started thinking about it, and then they developed this thing. They are collecting from several temples. उनका contract है कि भी आपके यहाँ जितना भी फूल चढ़ेगा वो मेरे पास आएगा. My people will go in the morning or a quarter of time and they will pick up the previous year's collection of flowers. Now the temples are happy because they have to otherwise find it difficult to dispose of the used flowers. अब वो कोई खरीद रहा है मुझसे. Now these boys, they started like that. There are people in the Bangalore area also who are doing it. In UP also there are few of them. There is one couple. There is one more which is doing it. One company is full, another company is running. They are selling. They are making incense stick. वो धूपबत्ती बनाते हैं, अगरबत्ती बनाते हैं, कई चीजें बनाते हैं. And they have started marketing those, and they have their website. I purchased from their website, and I was very happy. Even though ये अगरबत्ती हम लोग मार्केट में खरीदते हैं तो 15 रुपए का पैकेट आता है. इनका पैकेट 150 रुपए का होता है, उसमें क्या अगरबत्तियाँ होती हैं. But when I presented somebody with अगरबत्ती और उन्होंने from the flowers offered in the temples, they were very happy. because वो सोच रहे हैं कि भगवान का एक प्रसाद है. So we view it in a different angle, but then lot of things can be done with flowers either when they are fresh or even when they are not fresh. So that is the idea. Next one. Now we have very unorganized markets, and as you see, this is a very common thing in most of the markets in the country. Open में होता है, they are open to all the dust, and बारिश होता है तो सब लोग अंदर भागते हैं, कहीं कुछ पाते हैं, मार्केट बंद हो जाता है, very bad. Major markets are Gandhipur, Sagar in Mumbai, Malingarh in Kolkata, Pune in Bangalore, and other markets. And now, earlier यही market कहा जाते थे, Delhi market से काफी जगह जाता था. अब now people have started sending directly to smaller markets, Indore market, Kanpur market. ये छोटे-छोटे शहर हैं, पटना में कहते हैं. छोटे-छोटे शहर में जो intermediate और tier cities बोलते हैं इनको, वहाँ पे flowers directly
the growers are sending directly, saving on the delivery cost. Now, there are auction centers. Auction center का आपने concept marketing सुना है. They go to some extent Allah was mentioning that it moves backwards. The highest price is let's say $1. तो जब तक चलता रहेगा, जब तक आपको उसको खरीदते नहीं, तब तक वो चलता रहेगा. And once it reaches lowest price जो दिन की है, जैसे once I was in the market, वहाँ पे उस दिन उन्होंने roses की cost रखी थी 23 cents each, जो lowest रखी थी. 23 cents में पहुँच गया, किसी ने नहीं खरीदा तो उसको फेंक देंगे. ऐसा नहीं कि उसको नेक्स्ट दोबारा लाएंगे सस्ते में बेचेंगे, नहीं, उसको फेंक देंगे. And the quality of flowers which were being thrown, I had seen that was much better than the quality of flowers which we purchased in our market. Now that is the value of quality and that is the way of marketing. We have auction centers in I5 is the International Flower Auction in Bangalore, and there is one in Hosur in Tamil Nadu near Bangalore. Mumbai में और नोएडा में अनेक auction centers which are moving to Bangalore for certain reason which are because market infrastructure, I would prefer that there are organized markets with backward linkages. Flowers को मेरे grower को बताना चाहिए कि मेरे को यहाँ पे मेरे को best price मिलती है पुणे के market में या दिल्ली market में या इस market में मेरे को वहाँ बेचना है इस season में. क्योंकि देखिए जैसा market में भी होता है ना, अब जैसे देखिए कि I was told that marigold was being sold in even in Srinagar markets for 4-5 रुपए किलो बिक रहा था. I had gone to Pune 2 months back, in the beginning of September. This time I had gone to market to purchase some flowers, and I found that the genda was being sold for 20 rupees. Last year I was in Pune during Ganesh Utsav. At that time the rate was 150 to 225 rupees. Now उसके सीजन के हिसाब से होता है, तो मुझे ये देखना है कि किस सीजन में मुझे अपना कहाँ बेचना है. Community cold chain should be there. Everybody cannot invest in cold chain. So, अगर जो startups हैं, if somebody develops some refer grants or cold chain, कि भाई मैं I will provide it as a service unit. कि भाई आप छोटे grower हैं, आप नहीं कर सकते. I will provide you a service. तो आप मेरे को इतने पैसे देंगे, मैं आपका फूल लेके मार्केट में जाऊँगा ठंडी में, so that they will some investment. So that kind of thing. और in the community level, जो bigger production areas हैं, वहाँ पे सरकार अगर auction houses as I had said, I have in the Bangalore वाला auction houses है. Last year they had sold 10 crore flowers for 65 crore. That's a lot of money in terms of one market. वहाँ पे 2,000 घंटे का market होता है. Now let's come to, I'm sorry I'm taking more time than what was allotted to me. Floriculture in Kashmir. This is what happens when you are passionate about something. I will carried away by my love of it. Kashmir में strength आपकी पाओ. जो भी यहाँ पर लोग आते थे टूरिस्ट उनको कहाँ ले जा रहा है? शाहबाग गार्डन, धनबाद गार्डन दिखाते हैं. Tulip garden, I am very happy and you must welcome. I would request all the guys to stand up to you. Tulip garden यहाँ पे and देखिए उससे क्या हुआ, उसका एक चीज हुआ, मैंने देखा था बारिश visited Srinagar during a period when the tulips were not in bloom. But then I saw the way it had been planted and the way it had been planned, and I was very impressed. I mean, I had to watch the चीज़ है tourist floriculture. उसके बाद क्या हुआ कि पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूँ दिल्ली में भी वो लोग tulip ग्रो कर रहे हैं. चलिए बस उसको मास्टर साहब आपको जेल लगा देना है, कोई ऐसा नहीं है. तो उन्होंने वहाँ पे ग्रो किया. अभी मैं गया था बाकी शहर में भी शुरू हो गया है. बैंगलोर ऑल्सो है, नाउ स्टार्टेड डेवलपमेंट पीरियड हमारा सब चीज़ है. तो जो उन्होंने आप लोगों ने श्रीनगर में शुरू किया, कश्मीर में किया, कश्मीर में यू हैव बीन ग्रोइंग tulips for ages, but never at this scale, never for this purpose of attracting the tourists to come and see, because everybody used to go to Edenhof in Holland to see tulip garden. और यहाँ पे मैंने अपनी यहाँ पे किया था, तो that was a very big step in my opinion in promoting floriculture. The growth in area and interest extremely
यहाँ पे भी आप कहते हैं कि 300 हेक्टेयर में होता है, एग्रीकल्चर ज़्यादा में होता है, क्योंकि पहले 5 हेक्टेयर में शुरू होता है। तो अब वही है कि लोगों में इंटरेस्ट आ रहा है, लोगों को इसकी वैल्यू पता लग रही है, तो ये स्टार्टेड हुए, अब ये इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और इस तरह के प्रोग्राम होंगे तो उसके बाद तो वो थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर। हॉर्टिकल्चर इज पार्ट ऑफ द स्टेट इकोनॉमी। ये हमारे यहाँ पे कहते हैं कश्मीर में मिस्टर ऑल्सो was talking to people and they were telling me कि JNK की economy is based on two things. One is horticulture, the other is tourism. And horticulture is also related to tourism. मतलब जो है कि वो ट्रेन गाने की बात है, विशाल गार्डन, शालीमार बात है, कोई भी बात है। तो ये जो सब चीजें हैं वो भूगोल गार्डन जो डेवलप हुए थे कितने साल पहले डेवलप हुए, लेकिन अभी भी they are attracting people from places where there are no garden, और वो लोग यहाँ के खुश हो जाते हैं। और ये सब चीजें हैं। और दूसरा ये है कि I do not know whether it is the only state or it is among the few states where there is a separate department of tourism. किसी भी स्टेट की करिए, you are the separate minister of tourism. किसी भी स्टेट में tourism is a part of horticulture. Horticulture is a part of horticulture. At best in some of the states they have a horticulture minister, but generally it is in part of the agriculture minister. आपके पास में agriculture minister भी है। आज बात कर रहे थे commissioner जो agriculture commissioner from secretary of agriculture. Now that is something very very positive and that also shows कि unless I have believed that कि unless the government की policy support नहीं मिलेगा ना तो आपको ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। Good effort of building PHM infrastructure जो मैंने पढ़ा था अब उसमें तो प्लीज करेक्ट नहीं, हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनाए गए हैं। तो अब वो उनको आपको कैश करना है कि जो भी छोटी फैसिलिटी बनी है उसको कैसे बड़ा बनाया जाए, कैसे किया जाए, उसमें क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है। मेगा प्रोजेक्ट अभी एक कमेटी बनी थी, उन्होंने अभी जनवरी में 40 करोड़ का 30 करोड़ का सैंक्शन किया। अभी आज ही साहब भाई वो लेके आए हैं अप्रूवल बर्फ का करेंगे उसमें कितने हम ले सकते हैं। और वो इसी साल वाले एग्जिस्ट कर रहे थे कि हमको उसमें बजट में बोला है कि 400 करोड़ 500 करोड़ का प्रोजेक्ट बना के now that shows the value of agriculture and that is the thing that they are also started recognizing. So जब तक policy support ऐसे बढ़ती रहेगी तो they will much more scope. Next one. ये है prospects for tomorrow. Identify few selected crops for commercialization. कोई जरूरी नहीं है कि आपको सारे flowers grow करने हैं और special focus on oxygen production. कोई चीज जैसे यहाँ पे कई चीजें हैं flower seed production की बात कर रहे थे, किसान में 2 बार ले सकते हैं, हम 2 क्रॉप ले सकते हैं, लेकिन इसमें हम एक ही क्रॉप ले सकते हैं। So you double the income from a particular area. इसी तरह अगर और भी क्रॉप्स के ब्लेंडर्स के लिए आप 3 क्रॉप्स लेते हैं हमेशा, तो उस तरह से कई क्रॉप्स हैं जिसमें हम लोग ऑक्सीजन में कश्मीर इज ए टेक्निक बहुत congratulations for that. आपने प्रूव कर दिया कि it is a considered. I was correct in my assessment that कश्मीर का जो climate है ना उसमें can grow bulbs. What I would suggest is, if you take a suggestion, don't grow any other flower, just grow bulbs. आपके यहाँ से जो होगा ना, and then everybody in all across the world will come to Kashmir for buying the bulbs. अभी नीदरलैंड का जो बल्ब मार्केट है that is much higher than, much bigger than the flower market. नीदरलैंड is the largest market for flowers और उनका मेन जो है बल्ब मार्केट है और वो बल्ब बेचते हैं सारी दुनिया में। Identify specific areas and implement flower seed production. इसके लिए बात होगी आज सुबह। Promote cluster farming and FPOs बैठे थे वहाँ पे सुबह एक FPO के सेक्रेटरी वो बता रहे थे। तो उस तरह से होगा ना because small farms are there, unless you put them together, you will not have a produce to market in sufficient quantity. Preferably one district, one product. Our Prime Minister has been talking about one district, one product. इस तरह से आपको कर लीजिए और दूसरा जो मैंने लिखा है उसमें
inter versus intra-state competition. If you have one district, one product, then you are not competing with each other. Various districts are not competing with each other in terms of promoting a product. अगर कोई एक particular district A है, तो they are growing only let's say tulips. तो tulips और कहीं grow हो रहा तो वहीं से हमको tulip लेना पड़ेगा, तो उसकी value ज़्यादा मिलेगी मेरे को. उस तरह से, so that we should be competing with other states, not within the state. Strengthen PHM system जो मैंने बताया कि हर एक district में पहले ही हमने बनाया है, इसको और strengthen कीजिए. Beyond saffron, I would say saffron की हम बातें कर रहे थे कि yesterday I was talking to the people who are working doing research on saffron in a very big way, and I was talking to them कि सस्ता कब मिलेगा, कहते 200 ग्राम से भी सस्ता मिलेगा तो saffron. तो अब देखिए अभी भी इतने सालों से 200 रुपए पर ग्राम है saffron. उसी तरह आपका लवेंडर, जेरेनियम, रोजमेरी और कॉक्सकॉम है, मॉल, इसमें कितने पॉसिबिलिटीज हैं, कितनी पोटेंशियल है. आई वाज वेरी हैप्पी जब वो रजिस्टर साहब ने चाहे लाई कि ये रोजमेरी की है, हमारे यूनिवर्सिटी की है, ब्रांडिंग कर रहे हैं. तो देखिए उसमें पोटेंशियल है. दिस सेज द पोटेंशियल. नेक्स्ट वन प्लीज. दिस इज द लास्ट स्लाइड एंड आई वुड ओनली से वी कैन डू इट. ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोला है आप सोचते कि भाई तो हमारे बस के बाहर है. ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे बस के बाहर है. और हम लोगों की जो रिलीजियस है इंडियंस की, वो बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा है. और उनका मैंने एक चीज़ रियलाइज किया है, आज ट्रेवल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड आई हैव सीन दैट देयर इंटरेस्ट इज मेनली इन द मनी व्हिच दे जनरेट. आवर इंटरेस्ट इज इन एडिशन टू द मनी इज आल्सो आवर लव फॉर द फ्लावर्स. दे डोंट लव फ्लावर्स. वो जिस तरह से मैंने वो देखा था ना, और उसमें जो फूल कहते थे जो बिके नहीं थे क्वालिटी होता है, तो क्यों मांगते हो रहे हैं. Once I was in Delhi market, somebody was throwing gliders, बिके नहीं थे उसके ऊपर, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी तो उसे नहीं बिके थे उसको. तो वो क्या कर रहा था, कैंची से काट काट के फेंक रहा था, जैसे कोई यूज नहीं कर रहा था. मैंने कहा तो तुम गलत कर रहे हो कि कम से कम तुम फेंक दोगे, कोई तो ले जाएगा अपने घर में लगाएगा. तो आज एक बार फिर मैंने कहा कि तुम इनको ऐसा करो. वहाँ पे उस टाइम में दिल्ली में मार्केट होता था कनाम प्लेस में, तो मैंने कहा कि आप इसको ले जाइए, वहाँ पे वो रामनगर रोहिया हॉस्पिटल है, वहाँ पे ले जाइए और वहाँ हर एक पेशेंट को एक बुके दे दीजिए ग्लाइडर्स का. तो कहते उससे क्या होगा, मैंने कहा उनकी दुआएं मिलेंगी, आपको आपका मार्केट बढ़ेगा. और दूसरा फिर उन्होंने कहा कि बड़ा मुश्किल काम है, वो नहीं करना चाहते विकल्प. तो मैंने कहा जितना अपनी बात है आपके पास मेरी गाड़ी में रखो. तो उन्होंने सोचा कि भी मैं झूठ बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ उनसे. तो मैंने कहा कि मैं सर में बोल रहा हूँ, मेरे को दे दो, कितने पैसे दोगे. तो एक आदमी के मुँह से निकल गया 200 रुपये. दैट मटेरियल वाज वर्थ मोर देन 500 रुपये. उसे मिल गया 200 रुपये की मुफ्त में मिल रहा है, तो 200 रुपये मिल जाए. उसने जैसे मेरे को बोला 200 रुपये, मैंने जेब से 200 रुपये निकाला, उसको दिए. उसने जिस तरह से छीनी मेरे हाथ से कि इससे पहले कि मेरा आइडिया बदल जाए, मैंने घर जाके उनके छोटे छोटे बुके बनाए और वो सब मैंने अपने पूरे पड़ोस में सारे मोहल्ले में दे दिए. तो उसके बाद उनके फोन आना, ये क्या दोबारा फूल कर दोगे. मैंने कहा अब मैं नहीं दूंगा, अब आप खरीदोगे. मैंने कहा अभी आपको मैंने फ्री में दे दिया, जस्ट टू गेट यू इंटरेस्टेड इन फ्लावर्स, ओनली बाय फ्लावर्स. और उसमें से 10 में से एक आदमी ने भी खरीदा, और उसके बाद में तो पर्पस वाज सर्व. थैंक यू. एज आई सेड, people work are and will continue to buy flowers and plants. तो उसमें हम लोगों का मार्केट के निकाल नहीं होगा. Thank you very much. And again, my apologies for taking more time than what I was supposed to do. बहुत टाइम लग गया. We are fortunate to have जावेद साहब. जावेद साहब है ये आर्किटेक्ट ऑफ टूरिस्ट गार्डन जो आप हर साल देखते हैं. तो इनका दादा ने साहब के साथ बड़ा पुराना जो है FOA में जब थे, तो वो परसों से बोल रहे थे कि मैं आऊँगा, लेकिन फिर नाउ वी आर वेरी थैंकफुल टू यू. तो इतने सारे जो यहाँ पर यस स्टूडेंट्स और जो बाकी हैं उनमें भी 2 आदमियों ने बनाया टूरिस्ट गार्डन.
नंबर 1 इस आजाद साहब और उनके जो जिन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया जावेद साहब, and they were assisted by 2 of our professors, एक काजी अल्ताफ साहब एंड रियाज साहब यहाँ पे अभी यहाँ नहीं, तो वो उन दोनों सो द होल टीम इज हियर सर, जो उनके साथ हमने काम किया था उस टाइम, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है स्टेट की इकोनॉमी पर। आज की डेट में कोई कम से कम 2000 करोड़ का हर साल हमें फायदा आता है टूरिज्म के। तो इट्स अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट। यू कैन सी कि जो एक पॉलिटिशियन का विजन उसको ग्राउंड पर लाना, फिर वो जावेद साहब ने किया एंड मेरे ख्याल में हो गए 16 साल 16 साल हो गए, तो वी हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट। तो मैं सर आपको थैंक यू कहूँगा। इट वाज अ वंडरफुल लेक्चर। जो हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं उनको ओवरव्यू मिला फ्लोरिकल्चर के बारे में, क्या क्या इसमें कर सकते हो। हमें सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज हमारी सब जावेद साहब के साथ जो ट्यूलिप की प्रेजेंटेशन थी, जब उसकी पहली मीटिंग हुई तो जावेद साहब भी उसमें थे। इट वाज एट द वाइस चांसलर्स रेजिडेंस, तो बहुत सारा इनपुट उनसे भी आया था। एंड उससे होके टुडे वी आर एबल टू present that before the chief secretary. He was happy, तो उनके प्रिंसिपल ने माना, लेकिन he has given a much bigger assignment। तो उनका प्रोग्राम है इसको होलिस्टिक दे लो नॉट ओनली बल्ब्स, ये उन्हें ऑन प्रिंसिपल माना एज सेंटर ऑफ एक्सलेंस एंड देन ग्रोइंग ट्यूलिप्स ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड। ये दो चीजें उन्होंने मानी। Now we have to work on other sectors also। तो ये जो प्रोग्राम था इसका जो है FPOs हमने बुलाए हैं डिफरेंट एरिया से। तो सुबह यहाँ पे डॉक्टर अदालत थे, तो क्योंकि उनको निकलना था, वो कल शाम को आए तो आज उनको निकलना था। तो ही ऑल्सो गिव अ लेक्चर ऑन, जो हमने सोचा कि सीड प्रोडक्शन यहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने डॉक्टर अदालत को ही यहाँ पे पाया। इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर। तो आज हमारे 2 इम्पोर्टेंट लेक्चर हुए। डॉक्टर लाल साहब ने आपको बता दिया, दादवानी सर ने बता दिया, उनका ओवरव्यू दे दिया, ताकि जितने भी FPO पे हमारे यंगस्टर्स हैं जो इसमें आना चाहते हैं, तो उनको पता चला कि फ्लोरिकल्चर कितना वास्ट है। ये बहुत वास्ट है और उसमें पैसा कमाने का जो है बहुत ही जो है आपको एस्टैब्लिशिंग अपना बिजनेस कर सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो प्रोफेशनल्स इसमें काम आ जाते हैं और नॉन प्रोफेशनल्स ही इसमें आगे बढ़ते हैं ज़्यादा। जितने भी ज़्यादा फ्लोरिकल्चरिस्ट है इसमें बिजनेस में आए हैं, दे आर इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो इसमें आगे बढ़े हैं। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, ही हैज सेट अप द फर्स्ट, विल बी हियर सुबह थे क्या फर्स्ट जो टिश्यू कल्चर लाया यहाँ पे बनाया। डॉक्टर मेडिको। सो जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री हो, और सबसे जरूरी है कि पैशन और फोकस हो। तो सर ने जो आपको बता दिया, इतने सारे इसमें एवेन्यूज हैं, तो आप इसमें से चूज कर सकते हो कोई भी एवेन्यू। अब तो मार्केटिंग के लिए बहुत से आपको एवेन्यूज हैं, ऑनलाइन है, सोशल मीडिया है। सो लॉट ऑफ पीपल, जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत अनयूजुअल चीजें बना रहे हैं और वो बेच रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि यहाँ पर सर अंधेरा जल्दी हो जाता है इस मौसम में, तो हमें पर्दे लगे हुए, हमें पता नहीं बाहर मौसम कैसा है और दिन कहाँ पहुँचा है, बारिश हो रही है। तो वी लाइक टू थैंक द ऑनरेबल स्पीकर सर, आपने टाइम दिया। सर शॉर्ट नोटिस पे आप आगे यहाँ पे वेरी थैंकफुल टू यू सर। एंड आगे भी हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ सर ये काम करते रहें एंड गाइड अस। और मैं थैंक यू करना चाहूँगा सारे पार्टिसिपेंट्स को। कल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है हमारे फॉर्मर HOD डॉक्टर जुबैर राहुल साहब का, एंड उसमें आप प्रोपोगेशन के बारे में सीखेंगे, जो यहाँ पर सबसे सक्सेसफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसमें और कम
जमीन पे आप उसको कर सकते हैं। अगर आपके पास रिसोर्सेज कम है, जमीन कम है, देन प्रोपगेशन इज द थिंग फॉर यू। तो प्रोपगेशन में जैसे अभी बता दिया आप, हमारे जो सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी ने बता दिया, तो हम यहाँ पे ड्रग प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं जो बहुत कम जमीन पे आप कर सकते हो। तो वो बहुत बड़ा जो है आगे आ रहा है। तो हमारे जहूर साहब का उस पर जो है आपका लेक्चर है उनका, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल भी उसके बाद होगा, क्योंकि हमारे पास जो प्रोपगेशन फैसिलिटी हमारे फील्ड पे है, तो दैट्स द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन जम्मू एंड कश्मीर। वो सारा कुछ उसमें जो है ऑनलाइन यू कैन कंट्रोल इट। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी जो प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स हैं, कल जरूरी आपको आना है, क्योंकि हमने बहुत सारे जो एमिनेंट स्पीकर्स हैं इंडस्ट्री से और एकेडमिया से आपके लिए रखे हैं यहाँ पर। तो with these words I thank Dr. Arbani again and also other faculty members and our former head who are present here. Thank you very much.